Ganga
हरे कृष्ण आंदोलन जैसा लग रहा है जो सभी जगह फैला हुआ है। Who gave you permission that you're free from the bridge preaching program? किसने आप लोगों को अनुमति दी उस bridge preaching program से बाहर निकलने के लिए? I thought you were not qualified to chant Hare Krishna. मुझे लगा था आप लोग हरे कृष्णा कीर्तन करने के लिए योग्य नहीं हैं। Hare Krishna. Scientifically not correct. No. Hare Krishna. I wasn't good at geometry, but मैं ज्यामिति में बहुत अच्छा नहीं था। even that I can figure out. वो भी मैं पता लगा सकता हूँ। By mercy. लेकिन कृष्ण कृपा से। Thank you. धन्यवाद। Very good. Thank you. धन्यवाद। All right, you get over this side. You don't know the Mataji. I need to look at you and not the Matajis. With all due respect. The women nowadays, they're running everything, you know, so you have to be very, very careful. You make some aparad, you know, to the women's independence movement. Srila Prabhupada said, you asked all the women now, after all of these years practicing this women's independent movement, how many of you are peaceful and happy and satisfied? आपने इतने सालों तक नारी स्वतंत्रता आंदोलन के लिए लड़ाई लड़ी और अंत में क्या सारी लड़ाई लड़ने के बावजूद आप सब शांत हैं या नहीं? No protection, no shelter. कोई आश्रय नहीं, कोई रक्षण नहीं। Anyway, that's a whole other story. We'll talk about that another time. लेकिन वो अलग ही कहानी है, उसके बारे में हम किसी और समय बात करेंगे। First, we have to get purified because then everyone will think they are their body. And other women will be like, why is he preaching to the women? पहले हमें स्वयं को शुद्ध करने की जरूरत है ताकि हम इस शरीर की शिक्षा से बाहर आ सकें। क्यों हम महिलाओं के बारे में या पुरुष के बारे में बात कर रहे हैं? This is meant for every soul. ये हर एक जीवात्मा के लिए। So today is the disappearance day. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. आज श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है। And it's very important to get extra special mercy from such powerful Vaishnavas, especially on appearance disappearance day. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐसे शक्तिशाली वैष्णवों का कृपा पर विशेष कृपा प्राप्त करना, विशेष करके उनके आविर्भाव और तिरुभाव दिवस के दिन। So unfortunately I couldn't walk to go with you on the Harinam, but my heart and soul was with you. तो दुर्भाग्य से मैं आप लोगों के साथ हरिनाम में चल नहीं पाया, लेकिन मेरा हृदय और मेरा मन आत्मा आपके साथ थी। And I got all the reports. और मुझे सारी खबर मिली है। I asked every single person who was in good consciousness. और मैंने हर एक उस व्यक्ति से सवाल पूछा जो अच्छी चेतना में थे। So I found out मुझे पता चल चुका है who's simple, who's complicated, कौन सरल है और कौन जटिल है, who's doing for love of God, कौन कृष्ण के प्रेम के लिए who's doing for name and fame. और कौन नाम और प्रतिष्ठा के लिए करता है। Anyway, that's another story. और ये एक और बात है। You see, I haven't seen you for so long. I have 1,000 things to talk about. तो मैं आप लोगों से बहुत समय से मिला नहीं था, मेरे पास हजारों बातें हैं अभी आप लोगों के साथ बात करने के लिए। And there's all different types of devotees here. और यहाँ अलग-अलग तरह के भक्त बैठे हैं। All different levels of consciousness. सबकी चेतना अलग-अलग स्तर पे। All many questions. सबके बहुत सारे प्रश्न हैं। Many doubts. बहुत सारे संशय I संदेह see a lot of minds, बहुत सारे intellects, मन and बुद्धि senses इंद्रियाँ staring at me, मेरी तरफ घूरते हुए देख trying रहा to हूँ, understand me. मुझे समझने का प्रयास कर रही हैं। Good luck. शुभकामनाएं Good luck. शुभकामनाएं।
So Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, the only way you understand is through your ear. तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा How to recognize Sadhguru Vaishnavas through the ear, not eyeballs. साधु गुरु वैष्णव को अपने कानों के माध्यम से पहचान सकते हैं, अपनी आंखों से नहीं. And not only what is being said, but what is the effect of what's being said. और केवल ये नहीं क्या कहा जा रहा है, उस कहने के बाद हमारे अंदर क्या प्रभाव होगा. That's how you can really know. इस तरीके से आप असल में जान पाएंगे. So whatever your questions and doubts are, Krishna knows perfectly well already what are those, whether you're conscious of that or not. तो जो भी आपके प्रश्न हैं, संदेह हैं, कृष्ण उनको पूर्ण तरीके से जानते हैं. हो सकता है आपको पता हो भी. And if you are conscious of it, then you're just waiting to get your answers to the questions that you have and things reconciled that are creating any type of doubt or any type of anxiety or fear. All of that thing Krishna has to, by His mercy, clear. तो जो भी अगर आपकी चेतना है और आप देख पा रहे हैं आपके सवाल और संदेह, तो केवल आप इंतजार करिए कि कृष्ण कैसे सारी चीजों को एकत्र करके उनकी कृपा से चीजों को सही तरीके से प्रस्तुत. What are we hearing? Is it according to Guru Sadhu Shastra, Krishna Parampara? That's the first thing. सबसे पहली चीज जो हम श्रवण कर रहे हैं वो कृष्ण गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण परंपरा के द्वारा आ रही है. Even Prabhupada, even some interview with some materialistic reporter, or writing in some letter, or giving some class, right? He's quoting Guru Sadhu and Shastra. प्रभुपाद भी जब कभी किसी भी इंटरव्यू के साक्षात्कार में या किसी से बातचीत के दौरान या किसी प्रवचन के दौरान हमेशा गुरु साधु शास्त्र की बातें कह रहे होते थे. Prabhupada said, "Who cares what is your opinion? प्रभुपाद कहते थे क्या फर्क पड़ता है, आपके क्या विचार हैं? Who cares what is my opinion? इससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे क्या विचार हैं? What is Krishna's opinion?" कृष्ण के क्या विचार हैं? That is the thing that needs to be heard. ये एकमात्र सुनने की जरूरत है. So Krishna giving instructions, Krishna Parampara will give exactly same instructions. तो कृष्ण जो निर्देश देते हैं, कृष्ण परंपरा बिल्कुल वही निर्देश देते हैं. Same philosophy, same Siddhanta, एक ही सिद्धांत. Bhakti Siddhanta. भक्ति सिद्धांत. That Siddhanta, Prabhupada said, is one. प्रभुपाद कहते हैं ये सिद्धांत केवल It's एक not है. even two. यहाँ तक कि दो भी नहीं है. Because ultimately that Siddhanta, that Tattva, Krishna Tattva, is coming from the Lord Himself. अंत में ये सारे सिद्धांत भक्ति सिद्धांत असल में कृष्ण से आ रहे हैं. So what Krishna has said, Krishna Parampara, they're saying as it is. तो जो कृष्ण परंपरा वो कह रहे हैं यथारूप की. Nothing added, nothing subtracted. Prabhupada said. प्रभुपाद कहते हैं ना तो उसमें कुछ जोड़ते हैं ना घटाते हैं. Prabhupada said, I read recently where Prabhupada was saying that many people want to glorify me in many, many ways. They've said I've done many wonderful things. तो हाल ही में मैंने पढ़ा प्रभुपाद कह रहे थे कि बहुत सारे लोग मेरा गुणगान करना चाहते हैं कि मैंने अद्भुत कारनामे किए हैं. And of course we feel that way. और हमें ऐसा लगता भी है As followers of Srila Prabhupada. तो हम श्री प्रभुपाद के अनुयायी हैं. ISKCON Prabhupada movement. ISKCON प्रभुपाद का आंदोलन है. So we see many things that glorify Prabhupada. तो हम बहुत सारी चीजें देख पाते हैं जो प्रभुपाद का गुणगान. But Srila Prabhupada said, if you want to give me one thing, श्री प्रभुपाद ने कहा अगर आप मुझे केवल एक श्रेय देना चाहते हैं, you can glorify just one thing I did. आप एक चीज का गुणगान कर सकते हैं जो मैंने किया. That what I heard from my Guru, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. जो मैंने श्रवण किया अपने गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से. I told you exactly what I heard from my Guru. मैंने बिल्कुल वही चीज आपको बताई जो मैंने अपने गुरु से श्रवण की थी. As it is. यथारूप. I didn't add anything. ना मैंने कोई जोड़ा, I didn't subtract anything. ना मैंने कुछ घटाया. And that is why, by the mercy of my Guru and the mercy of Krishna, that is why there's potency in these words. और इसीलिए मेरे गुरु की शक्ति से और कृष्ण की शक्ति की वजह से मेरे इन And शब्दों Srila में Prabhupada said, the purity, that is the force. प्रभुपाद कहते हैं शुद्धता में बल होता है. If we are not pure, by the mercy of Guru Krishna, we can never understand this philosophy properly. तो अगर हम शुद्ध नहीं हैं गुरु और कृष्ण की कृपा पाकर तो कभी भी हम इस सिद्धांत को समझ नहीं पाएंगे. Therefore, will not even, Prabhupada said, you're not even able to purify yourself. इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आप स्वयं को भी शुद्ध नहीं कर पाएंगे. What to speak of anybody else? और किसी और को शुद्ध करने का क्या कहना. So when Srila Prabhupada came to New York City on the order, instruction of his Guru, तो श्री प्रभुपाद न्यूयॉर्क शहर में आए अपने गुरु के आदेश Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. श्री भक्ति सिद्धांत So सरस्वती he had ठाकुर that के आदेश mandate, that से instruction. और उन्होंने उनके गुरु के निर्देश को ग्रहण किया. Anyway, this is exactly what I want to talk about. So I'm going to read something from Prabhupada when he's glorifying
Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ये बिल्कुल वही बातें हैं जिनके बारे में बात करना चाह रहा था। तो मैं श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान में जो बातें कही है I have to quote Guru Sadhu and Shastra. मुझे भी गुरु साधु शास्त्र Otherwise, you say, well, this is his interpretation of what he thinks he read. और वरना ये लोग कहेंगे, आप लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति अपनी कुछ बातें हमें बता रहे हैं जो उन्होंने पढ़ा, जो उनको समझ आ रहा है। So let's establish it directly by Srila Prabhupada's own heart, own voice. तो चलिए हम उसको सीधे सीधे स्थापित करते हैं श्रील प्रभुपाद के खुद के हृदय और उनकी आवाज की बात है। Hare Krishna. Please move up. Let the more devotees come. थोड़ी और सामने आप लोग बैठ ताकि और भी बात बैठ सकें, थोड़ी जगह ज़्यादा बनाइए। We're going to try to put a pandal on the roof. We're building it now, so we have more room. तो हम छत पर एक पंडाल बनाने की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे और ज़्यादा वहाँ पे जगह मिलने वाली है। And we have a very strong faith that if we represent Srila Prabhupada's books and teachings and instructions, that Srila Prabhupada's mercy, that Mahaprabhu's mercy, that more and more souls will come to try to hear the same message that our soul needs to hear. तो हमें पूरी श्रद्धा है कि हम श्री प्रभुपाद की बातों को गुरु साधु शास्त्र को प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, और भी ऐसे जीवात्माएं हैं जो इसको सुनना चाहते हैं, वो वहाँ पर आएंगे। We're actually hankering for this information. हम ऐसी जानकारियों को पाने के लिए हमारी उत्कंठा है। They're talking about the, psychology and yoga and pranayam and, 50-year conversation of who and what is a guru. तो योगा, प्राणायाम और 50 सालों से यही चर्चा में लगे हैं कि कौन है, क्या है गुरु। Right, there's still after so many years, right? They have so many committees and subcommittees of the subcommittees, and everyone's scouring through the books and trying to figure out what is Guru Tattva. तो उन्होंने समितियां, What's a guru? समितियां बनाई हैं। Guru, am I a guru? Is she a guru? उन्होंने इतनी सारी समितियां बनाई, उन समितियों के अंदर भी और छोटी-छोटी समितियां बनाई है ये पता लगाने के लिए कि कौन है, क्या है गुरु, गुरु तत्व क्या है, क्या वो गुरु, क्या आप गुरु, क्या वो गुरु हैं। Right, all the scholars, everyone reading the books, day and night, right? 50 years. तो सारे विद्वान हैं, दिन रात 50 साल से किताबों को साथ में पढ़ रहे हैं, big lectures, writing books, बड़े-बड़े प्रवचन दे रहे हैं, किताबें लिख रहे हैं, and nobody can agree on an understanding of what is actually Guru Tattva. इनमें से कोई भी आज तक सहमत नहीं हो पा रहा या प्रस्तुत नहीं कर पा रहा गुरु तत्व असल में क्या है। That means that they've not got mercy from Krishna or Krishna Parampara. इसका मतलब उन्हें कृष्णा और कृष्ण परंपरा से कृपा नहीं मिली है, Or from Shastra. या शास्त्र से, Because you cannot understand it just by scholarship. क्योंकि आप इसको केवल अपने विद्वता से समझ नहीं पाएंगे। This is a question of revealed scriptures. ये प्रश्न है प्रकाशित। The scriptures are non-different from the Lord. तो ये ग्रंथ भगवान से अभिन्न है। So without mercy of Krishna, Krishna Parampara, Shastra, nobody can understand this तो thing. कृष्ण परंपरा शास्त्र के कृपा के बिना कोई भी इसको समझ नहीं पाएगा। That's why there's so much discussion, so much argument, इससे बहुत सारे चर्चाएं और बहसबाजी हो रही है, so many apologies, बहुत सारी so many क्षमा papers, की जा रही है, बहुत सारे कागज, so many corrections of the papers, और फिर उन कागजों में बार-बार उनको so many दोबारा corrections, किया जाता है, corrections of the papers, और उन सही किए हुए कागजों को दोबारा से सही किया जाता and है, everyone's still trying to figure it out. और तब भी अभी भी लोग पता लगाने का They प्रयास asked the कर Guru रहे a हैं। question, he said, well, the Shastric Advisory Committee, they're working on that now, so I'll answer that philosophical question once they give that final rendition. तो जब गुरु से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं अभी ये प्रश्न का उत्तर शास्त्रीय सलाहकार समिति इसको खोजने का प्रयास करिए, जब वो उसको पता लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगा। Krishna, Prabhupada, all Vaishnavas, they said bona fide gurus is a pure via medium of Krishna. प्रभुपाद जितने भी प्रामाणिक आचार्य बताते हैं कि गुरु कृष्ण के शुद्ध माध्यम होते हैं। So how they're not, the Guru does not understand the Guru Tattva? Why is he Guru if you don't understand Guru Tattva? तो कैसे गुरु तत्व नहीं समझता, गुरु तत्व बता नहीं पाता? It's a simple question. इतना सरल प्रश्न है ये। Shouldn't the Guru at least first understand what is Guru Tattva? कम से कम गुरु को सबसे पहले गुरु तत्व तो समझना चाहिए। So recently some Maharaja put out a big paper on Guru Tattva. हाल ही में एक बड़े महाराज ने बहुत ही बड़ा कागज लिख दिया Mayapur open forum, I believe, right? और मायापुर के फोरम में उन्होंने डाला है उसको। And what was the question is who can deliver? और उसमें प्रश्न क्या है, कौन मुक्त कर सकता है आपको? So I'm always very curious to listen how different preachers, Maharajas, Gurus, what do they know
And of course what they're saying will show whether they know what they don't know. और मैं हमेशा ये जानने का देखने का प्रयास कर रहा था ये प्रचारक ये महाराज स्वामी ये लोग क्या क्या बातें करते हैं इस विषय के बारे में और ये पता चलेगा वो क्या जानते हैं और क्या नहीं जानते। Srila Prabhupada said a well-dressed fool is not detected until he starts speaking. श्रील प्रभुपाद बताते हैं एक मूर्ख जो अच्छे कपड़े पहन कर आया हो तब तक नहीं पकड़ा जाता जब तक वो बोलना शुरू So नहीं some करता। people they may look real pucka, तो कुछ लोग देखने में पूरे पक्के लगते हैं really pucka, असल में पक्के लगते हैं but are they speaking Bhakti Siddhanta? लेकिन क्या वो भक्ति सिद्धांत Are they quoting Guru Sadhu Shastra? क्या वो गुरु साधु शास्त्र बता पा रहे हैं And is it theoretical? Is it speculative? Or is it realized? और क्या वो केवल मौखिक है मनोधर्म के आधार पे बता रहे हैं या उन्होंने असल में उसका साक्षात्कार Is it academic, scholarly? किया केवल शैक्षणिक स्तर पे अपनी Or विद्वता के is it स्तर practically realized? पे या व्यावहारिक Jnana or Vigyan? ज्ञान या फिर विज्ञान Those are the things we need to understand. ये चीजें हमें समझने की जरूरत है। So how will you understand the difference between Jnana and Vigyan? तो आप ज्ञान और विज्ञान के बीच में अंतर कैसे समझ पाएंगे? Or knowledge, and Prabhupada calls it scientific realization. ज्ञान और प्रभुपाद बताते हैं विज्ञान। So if we're situated with a theoretical philosophical conception on the platform of Jnana, then how can we, what measuring instrument do we have to understand what is Tattva Vijnana? तो अगर हम खुद ज्ञान के स्तर पे भौतिक मौखिक स्तर पे हैं तो कैसे हम तत्व विज्ञान को समझ पाएंगे? That requires special mercy इसे समझने के लिए विशेष कृपा की जरूरत होती है कृष्ण से and Krishna devotee, और कृष्ण के भक्त से Shri Guru Vaishnava, श्री गुरु वैष्णव Parampara. परंपरा से। Like you asked it many times, you asked, Maharaj, can you explain what is Parampara? कई बार आप देखेंगे पूछा जाता है महाराज क्या बता सकते हैं You परंपरा क्या know, होता I had है? a guru, he's in the movement, he's talking about Krishna and I'm talking about Krishna, that's Parampara. वो कहते हैं हाँ मैं इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ वहाँ एक गुरु हैं जो कृष्ण के बारे में बात करते हैं मैं भी कृष्ण के बारे में बात करता हूँ यही है परंपरा। So you see in Prabhupada's description of who and what is Parampara. आप देखिए प्रभुपाद ने क्या विवरण दिया है कौन और क्या है परंपरा। Right, and then it comes to ISKCON and there's like, say 50,426. ISKCON में आप जाइए प्रभुपाद के बाद 50,300 कुछ सारे परंपरा हो चुके हैं। People who came, left, लोग आए वो लोग चले भी गए people who stayed. और कुछ उसमें से रह भी गए। So that's Parampara. ये है परंपरा। You see how big topic, there's so many topics. तो देखिए बहुत सारे विषय हैं। Where do we go from here? Because it can get controversial. यहाँ से हम आगे किधर बढ़े? It can get controversial real fast. अब बहुत जल्दी विवाद में घुस Because when गए। you speak the truth, according to Guru Sadhu and Shastra, don't expect to win popularity contests. क्योंकि जब आप गुरु साधु शास्त्र सत्य बात बोलना शुरू करेंगे तो लोगों के बीच प्रसिद्धि पाना Srila मुश्किल है। Bhaktivinoda Thakur said that everybody will get together and they will just go against you. श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा है सारे लोग आपके खिलाफ खड़े होकर आपके विरोध में जाना शुरू हो And जाएंगे। you see Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he had chopping technique. और ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के पास हलाल करने The Sima Guru. सिम्मा गुरु When he walking up the street, all the other devotees, other people go running across the street. They're going on the other sidewalk. जब वो रास्ते They पे don't even want to see him. जब वो रास्ते पे चल रहे होते थे तो दूसरे जितने भी अलग तरह के भक्त उस रास्ते को छोड़ के दूसरे रास्ते से जाना शुरू कर देते थे उनके सामने भी आने से वो डरते थे। Even they wanted to kill Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. यहाँ तक कि वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मारना तक चाहते थे। Even his godbrothers, he's preaching to his godbrothers. Basically, unless you surrender to me, you cannot understand Srila Bhaktivinoda Thakur. यहाँ तक कि वो अपने गुरु भाइयों को ये प्रचार करते थे अगर आप यहाँ आकर शरणागत नहीं करेंगे तो श्री भक्तिविनोद ठाकुर की शिक्षाओं को नहीं समझ पाएंगे। Just by reading his books. केवल उनकी किताबों को पढ़ के। You have to come, you have to surrender to present link, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा आपको आना होगा और वर्तमान में मौजूद परंपरा को शरणागत करना। And Srila Prabhupada said the same thing. He said, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he's so elevated, so intelligent. Even sometimes Prabhupada in his humility said, I don't even understand what he's saying. कई बार श्री प्रभुपाद ने बताया श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इतने उन्नत इतने ज्ञानवान व्यक्ति थे कई बार वो अपनी विनम्रता से ये भी कहते थे कि वो क्या बातें कर रहे थे मुझे समझ भी नहीं आती थी Because he's so elevated personality. क्योंकि वो इतने उन्नत व्यक्तित्व थे। And Srila Prabhupada said, I didn't even really
I was just reading all day, Prabhupada was saying that when he heard from his guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he said, I didn't understand everything he was saying, but I just really loved him and I liked hearing from him. तो श्री प्रभुपाद ने कई बार उनके श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान में ये बात कही, वो क्या बातें कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन उनसे श्रवण करना और उनके पास रहना मुझे उससे बहुत प्रिय था. And he said, my guru, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he marked me. He said, this boy, he doesn't like to go away. He likes to hear Hari-Katha Krishna-Katha. प्रभुपाद ने कहा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस बात को पहचान लिया कि ये व्यक्ति, ये लड़का ये जाता नहीं है, ये रहता है और सुनता रहता है. So that's how Srila Prabhupada got all mercy and potency in Parampara from Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. इस तरह से श्रील प्रभुपाद को परंपरा की कृपा मिली और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की कृपा मिली. How much time do we have? कितना समय है हमारे पास? Do you have an appointment? किसी की कोई big appointment? किसी को मिलने जाना है, किसी के पास कोई बड़ी मुलाकात करनी है. Which version do you want? आपको कौन सी मुलाकात चाहिए? Do you want the quick version or do you want the deeper version? तो आप जो छोटा चर्चा चाहते हैं हम लंबी चर्चा करें. Should we do that way? Yes. Can you handle it? आप लोग चल पाएंगे? Sure? All right, let's do it. ठीक है, चलिए. Okay, you just take care of this. You will take care of this. I will take this long. And you'll see when we read this that many of these points will come out. और आप देखिएगा जब हम इनको पढ़ेंगे बहुत सारे ये विषय बाहर आएंगे. Srila Prabhupada was speaking on Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Disappearance Day lecture, December 13, 1973, Los Angeles. तो श्री प्रभुपाद श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के तिरुभाव दिवस के लिए इस 3 दिसंबर 1975 में उन्होंने एक प्रवचन दिया था. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Consciousness Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Chadene Vishesha Shungarani Prasitani Vishitani. Srila Prabhupada said that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur passed away from the material world on 31st December 1936. तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस भौतिक जगत से प्रकट हुए 31 दिसंबर 1936. So at that time it was 40 years previously. तो उस समय 40 साल पहले की बात थी. So there are two phases, prakata and aprakata. प्रभुपाद बता रहे हैं दो भाग होते हैं, एक प्रकट और एक अप्रकट. Appearance and disappearance. प्रकट और अप्रकट. So physically manifested and disappearance. तो उनका शारीरिक रूप प्रकट होना और फिर उसका अप्रकट हो जाना. So we have nothing to lament on account of disappearance because Krishna and Krishna's dear devotees, nobody, they don't disappear. They never disappear. तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है क्योंकि कृष्णा के भक्त कभी अप्रकट नहीं होते. Because not only devotees, even non-devotees, nobody disappears. प्रभुपाद कह रहे हैं ना तो केवल भक्त बल्कि अभक्त भी कभी अप्रकट नहीं होते. Because every living entity, as Krishna, is eternal. तो जैसे कृष्ण नित्य है उसी तरह सारे जीवात्मा Nityo भी नित्य nityanam हैं. chetanas chetananam pankata upanishad. कठोपनिषद में ये बात बताई गई है. So Krishna is eternal, nitya, so also is the living entities. तो कृष्ण नित्य है और जीवात्मा भी नित्य But है. Krishna is the chief of the eternal living entities. लेकिन कृष्ण सारे नित्य जीवात्माओं में सबसे प्रमुख है. So Prabhupada says, so spiritually appearance and disappearance, there's no difference. तो श्री प्रभुपाद बता रहे हैं आध्यात्मिक रूप से प्रकट होना और अप्रकट होना में कोई अंतर नहीं है. Just like in material point of view, जैसे if a person takes birth, जैसे भौतिक दृष्टिकोण से जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है suppose you get the son or daughter, then you become very happy. तो मान लीजिए आपको बेटा या बेटी होती है, आप बहुत खुश होते हैं. And then when they pass away, then you become very unhappy. और जब वो गुजर जाते हैं तो आप बहुत दुखी हो जाते हैं. So this is material. तो ये है भौतिक. But spiritually, there's no such difference of appearance or disappearance. लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रकट होना और अप्रकट होने में कोई अंतर नहीं है. So although this is the disappearance day of Om Vishnupad Shri Srimad Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, so there is nothing to be lamented. तो इसीलिए ये श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव दिवस है, तो हमें इस पे शोक करने की कोई जरूरत नहीं. Although we feel separation,
और यद्यपि हमें विरह की अनुभूति That हो रही feeling is there. है, ये अनुभव हमें हो रहा है, But spiritually, there's no difference between appearance and disappearance. लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रकट होना और अप्रकट होने में कोई अंतर नहीं है। My Gurudev Srila Govinda Swami, many times he said, I never feel that I'm separated from my Guru. मेरे गुरुदेव श्री गौरव साहब महाराज कई बार कहते थे, कभी भी मुझे I ऐसा never महसूस feel नहीं हुआ that मैं he अपने गुरुदेव से disappeared or he went away. अलग हूँ, वो अप्रकट हो चुके हैं, कहीं जा चुके He's हैं, always whispering in my ear. वो सदैव मेरे कानों में फुसफुसा रहे हैं। And sometimes he said, you need a slap, he'll also give you a slap. मैंने कहा कि कई बार आपको थप्पड़ की जरूरत होती थी तो थप्पड़ भी लगाते थे। That's a Guru Tattva. ये है गुरु तत्व। So my Gurudev, what does this say? Nitya Lila Pravishta Om. My Gurudev never say like that, never allowed to say like that. तो ये जो बातें कही जाती है नित्य लीला प्रविष्टम, तो मेरे गुरुदेव ने न तो खुद कभी ऐसा बोला और न कभी किसी को ऐसा बोलने भी दिया। Because you are saying he's not here. क्योंकि आप लोग ये कहना चाह रहे हो कि वो यहाँ प्रकट नहीं है। But he always feeling presence of his Guru, always hearing instructions of his Guru. लेकिन वो सदैव अपने गुरु के मौजूदगी का अनुभव कर पा रहे हैं और उनके समझ पा रहे हैं। Only that couple, that personal association, naturally this feeling that there's some feeling of how do you say, some mood separation. केवल बाहर से ये बापू संग नहीं मिल पाने की वजह से बाहरी रूप से एक विरह का आभास देख पाते हैं। So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he expressed his desire. तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी इच्छा प्रकट की। Pritivite Achayata Nagaradi Gram Savata Pachara Haide Mora Nam. Chaitanya Bhagavata Antya Kanda. चैतन्य भागवत अंत्य कांड 4:126. 4:126। Sri Chaitanya Mahaprabhu said, in every town and village all over the world, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा हर एक नगर ग्राम शहर the में chanting of my name will be heard. मेरे नाम का कीर्तन सुना जाएगा। So Srila Prabhupada said that he predicted it, Mahaprabhu predicted तो it. श्री प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं महाप्रभु ने भविष्यवाणी की That all over the world, as many towns and villages are there, everywhere, my name will be chanted and will be known. तो पूरे विश्व में जितने भी नगर ग्राम शहर हैं वहाँ मेरा नाम कीर्तन गाया Sri जाएगा। Chaitanya Mahaprabhu's name, which is now attempted now, actually it is coming true. तो ये श्री चैतन्य महाप्रभु का नाम इसको प्रचार करने का प्रयास किया गया, असल में सत्य हो रहा है। And to execute this will of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he also personally said, और श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से ये बात कही। Brahmata Bhumite Manusha Janma Paya Yara Janma Sakata Kari Kara Para Upakara. Chaitanya Charitamrita Adilila 9:41. चैतन्य चरितामृत आदिलीला 9:41। One who has taken his birth as a human being in the land of India, Bharatavash, तो जिसने भी मनुष्य का जन्म लिया है भारतवर्ष में, he should make his life successful उसे अपना जीवन सफल बनाना चाहिए and then work for the benefit of all of the other people. और उसे बाकी लोगों के लाभ के लिए कार्य करना चाहिए। So in order to spread Mahaprabhu's teachings and his mercy in every town and village all over the world, it requires those personalities from Bharatavash, from India, to become perfected in the Nitya Siddha, in order to then travel to other countries, other places to fulfill the desire of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तो श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश और उनकी कृपा को प्रसार करने के लिए भारतवर्ष के लोगों को पहले स्वयं को साध्य बनाकर, सिद्ध बनाकर, योग्य बनाकर तब जाके वो महाप्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्व में प्रचार करने के लिए जा सकते हैं। That's their special responsibility. ये विशेष दायित्व है। It's said to so many, so if so much is given to you, so much is also respected or expected from you. कहा जाता है जितना आपको दिया गया है उतना ही ज़्यादा उससे आपकी अपेक्षा भी की जाती है। So anyway, this is a really interesting topic तो ये बहुत ही दिलचस्प विषय है because I was thinking that all of the different Vedas क्योंकि मैं सोचता था कि सारे by Srila Vyasadeva जो श्री व्यासदेव ने लिखे and all the different systems of karma, jnana, yoga, bhakti, everything is established there within the four Vedas. और जितने भी अलग-अलग पद्धति कर्म ज्ञान योग ये वेदों में बताए गए हैं
And all the different yugas, Satya, Treta, Dwapar, Kali. और जितने भी अलग अलग युग सत्य द्वापर त्रेता और कली युग It's all being preached to Indian people. ये हर बार भारतीय लोगों को प्रचार किया जा रहा है Isn't it? ऐसा है Wasn't that all compiled at that time, and wasn't that who was being preached to? तो जब इन सारी चीजों की रचना की गई और जब इसका प्रचार किया जा रहा था तो इन्हीं लोगों को किया जाता One time I was preaching in America, and I was preaching to an Indian community, and my Indian godbrother started chastising me afterward. How are you preaching to these people about, purification and getting free from sinful desire and sinful reaction? These people are Indian. You're supposed to speak about Krishna, Kahani, Krishna Lila. तो एक बार जब मैंने प्रवचन दिया भारतीय समाज के लोगों को और उस क्लास खत्म होने के बाद मेरे गुरु भाई मुझे डांटने लगे कि कैसे तुम भारतीय लोगों को शुद्धिकरण प्रक्रिया पाप कर्म की छाव से कैसे मुक्ति पाई जाती है इसके बारे में बता रहे हो ये भारतीय लोग हैं इनको कुछ कहानी लीला सुनाओ And I said, well, if they're so qualified for Krishna Lila, what are they doing in America? तो मैंने कहा अगर ये इतने योग्यवान है कृष्ण लीला सुनने के लिए अमेरिका में क्या कर रहे हैं That's another interesting question. ये एक और दिलचस्प सवाल है You don't leave the Dham to go to America to hear, Krishna Lila. हम तो छोड़ के अमेरिका नहीं जाएंगे कृष्ण लीला सुनने So this is type of misconception was there with my very. I love my godbrother, but there's a bodily conception. तो ये जो गलत अवधारणा है मेरे गुरु भाई की मैं अपने गुरु भाई से बहुत प्रेम करता हूँ लेकिन उसके शारीरिक मनोधारणा है And then somehow I said to him, I said, well, all of these instructions really at the time that it was written and spoken, all of that was in India. मैंने उनको कहा कि जब भी ये सारे निर्देशों के बारे में चर्चा की गई ये उन्हीं लोगों को प्रचार किया गया ज्यादातर भारतीय Indian लोग body devotees preaching to Indian body devotees or those who want to be devotees. तो ज्यादातर समय भारतीय शरीर वाले भक्त भारतीय शरीर वाले लोगों को प्रचार कर रहे थे या फिर जो लोग भक्त बनना चाहते हैं उनको ये प्रचार किया जाता था And then all of these different systems in the Vedas, karma, jnana, yoga, bhakti, through all these different yugas, right? This is a gradual process of purification and elevation. तो अलग-अलग वेदों में जो कर्म ज्ञान योग भक्ति की बातें की गई है अलग-अलग युगों में ये धीरे-धीरे उन्नति करने की प्रक्रिया है Including Daivi Varnashram, और इसमें दैवी वर्णाश्रम भी आता है coming to Brahminical consciousness, ऐसे हम ब्राह्मण के स्तर की चेतना में आ सकते हैं or even impersonalism versus personalism. यहाँ तक कि मायावाद और उसके खिलाफ जो Right. So all of these different systems and all of these different goals within those different systems, all of that was being taught from the Vedas and the acharyas and teachers in India. और ये सारे अलग-अलग तरह की व्यवस्थाएं और इन सारे अलग-अलग व्यवस्थाओं का लक्ष्य ये सारे वेद और भारत के जितने ये शिक्षक थे आचार्य थे इन्होंने ये सारी चीजें समझाई Veda means Vedic culture. तो वेद का मतलब होता है वैदिक संस्कृति So the Vedic culture is understood and being practiced within India. तो और वेद और वैदिक संस्कृति भारत में अभ्यास की जाती है So if those personalities can become perfected through all of those different processes, once they're perfected, then they can go outside to other places and try to, in an empowered way, try to purify and educate and shower mercy on people who have absolutely no qualification. तो जब ऐसे व्यक्तित्व एक प्रक्रिया का पालन करके स्वयं को सिद्ध बना ले तब वो योग्यवान होकर बाहर जाकर पूरी शक्ति के साथ प्रचार कर सकते हैं और बाकी लोगों को भी शुद्ध करके और उनको भी इस प्रक्रिया में लेकर आ सकते हैं What do you think of that point so far? Do you agree with that? तो आप क्या इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं आप सहमत हैं मेरी इस बात से But maybe if some Westerners made some paintings, they might look like there's some white American sitting there listening to Shukadeva Swami. तो हो सकता है तो उस तस्वीर में किसी विदेशी ने जो तस्वीर बनाई थी सुखदेव गोस्वामी की उसमें उसने किसी भारतीय को सफेद रंग डालकर ऐसा मोह मिठाई दिखाया कि वो विदेशी व्यक्ति था Narada Muni, Prahlad Maharaj, Bharat Maharaj, भारत महाराज all the Rajashis. सारे राजर्षि
So the Vedic culture means Bharatavasha. तो वैदिक संस्कृति का मतलब है भारतवर्ष, Vedic culture means Krishna culture. और वैदिक संस्कृति का मतलब है कृष्ण So की Prabhupada संस्कृति। says that Bhagavan, Bhakta, Bhakti, they're not of the material world. तो प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान भक्त भक्ति इस भौतिक जगत के नहीं। Material world means a prison house, Maya Jagat. तो भौतिक जगत का मतलब कारागार माया जगत। So unless Krishna, Krishna's devotee, and their prema come and descend here, there's no spiritual light and revelation and qualification. तो जब तक कृष्ण कृष्ण के भक्त यहाँ अवतार नहीं लेते हैं, तब तक यहाँ किसी तरह का प्रकाश या किसी तरह की चीजें लोगों के सामने प्रकाशित नहीं हो पाएंगी। They can't be speculated upon. You can't even think it out. हम इसका मनोधर्म या इसके बारे में विचार करके पता नहीं लगा सकते। So therefore, Krishna's mercy. Krishna says to show mercy to my devotees, then I descend. तो कृष्ण बताते हैं कि अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा देने के लिए मैं यहाँ Give them अवतार लेता pleasure. हूँ, उनको आनंद देने के लिए And to destroy all of these demons और इन सारे असुरों का नाश करने के who are लिए getting in the way of my devotees doing the devotional service. जो मेरे भक्तों के रास्ते में आ रहे हैं, जो भक्ति And to सेवा करना चाहते re-establish हैं religious principles. और धर्मों का फिर धर्म के सिद्धांत का स्थापना And Krishna says, I come again and again. और कृष्ण कहते हैं मैं बार-बार आता हूँ And not only Krishna, but also his devotees. और केवल कृष्ण ही नहीं, उनके भक्त भी आते हैं। Those devotees means Nitya Siddha. तो वो भक्त मतलब That नित्य means सिद्ध they are eternally Siddha. They're eternally devotees of the Lord. यानी कि वो नित्य भगवान के भक्त हैं और नित्य सिद्ध हैं। They're never conditioned. वो कभी भी बद्ध स्थिति में नहीं आते हैं, So they also come. तो वो भी यहाँ आते हैं। So without Krishna, without his devotees, and without that bhakti, which is all from Shuddha Sattva platform, transcendental platform, there's no access to that platform offered to anybody who's in ignorance or tamaguna. तो बिना कृष्ण के भक्त और भक्ति के यहाँ अवतार लिए बिना बद्ध जीवात्माओं के पास कोई मौका नहीं है इन चीजों के विषय के बारे में समझ पाने के लिए। So Krishna and even Mahaprabhu, they came to India, Bharatavash. यहाँ तक कि कृष्ण महाप्रभु ये भी भारतवर्ष में आए And also at the time, all of their devotees, although Nitya Siddha, और उस समय Mahabhagavad, they also descended to Bharatavash. उनके जितने सारे पार्षद नित्य सिद्ध वो भी भारतवर्ष में उन्हें अवतार लिया And then they also preached locally there. और उन्होंने भी लोकली आसपास के लोगों को प्रचार किया। Right, mostly 6 years he was preaching throughout India. महाप्रभु ने 6 साल पूरे भारत में प्रचार किया That was one of the external reasons why Sri Chaitanya Mahaprabhu came. और ये एक और बाहरी कारण था जिसकी वजह से चैतन्य महाप्रभु ने अवतार लिया। And then his devotees traveled to Vrindavan and holy places, establishing books and teachings. और उनके भक्त वृंदावन और सारे पवित्र स्थानों को में जाकर उन्होंने भक्ति के ग्रंथ साहित्य And this way trying to qualify everyone. और इस तरह से सभी लोगों को उन्होंने योग्यवान बनाने का प्रयास किया। But they also didn't travel outside of Bharatavarsha. लेकिन ये भी भारतवर्ष से बाहर Neither सफर Mahaprabhu नहीं or किया, Krishna ना तो महाप्रभु or ना any of the कृष्ण other Nitya Siddhas up to that time. और कोई भी नित्य सिद्ध नहीं जो उस समय तक थे, Especially before Kali Yuga. और विशेष करके कलियुग के पहले। Is that right? I'm not a scholar, but I think that's my understanding. तो मैं कोई बहुत बड़ा विद्वान नहीं हूँ, लेकिन क्या ये बात सही नहीं है और क्या मेरी समझ सही नहीं है? Is that correct? क्या ये सही है? So it says first, perfect yourself, इसलिए कहते हैं पहले स्वयं को then go out. सफल बनाएं, उसके बाद बाहर जाएं। So if you're raised in the culture, you're hearing Bhagavatam and Bhagavad Gita and hearing from Sadhguru Vaishnavas from your opportunity from the beginning of your life, then you have the greatest opportunity. तो आप As early as possible, the Maharaja said. इस संस्कृति में पले बड़े हैं और शुरू से ही साधु गुरु वैष्णवों से श्रवण कर रहे हैं, तो प्रहलाद महाराज बताते हैं ये सबसे आप लोगों के पास सबसे अच्छा मौका है आगे बढ़ने का। So Prabhupada says he wanted that his name should be broadcast all over the world in every town and village. और श्री प्रभु बता रहे हैं महाप्रभु की इच्छा थी कि ये नाम पूरे विश्व के सारे शहरों और गांव में प्रचारित किया जाए। And who would do that? और ये कौन करेगा? Prabhupada said that he asked that anyone who has taken birth in Bharatavarsha, India, that is his first duty. तो उन्होंने कहा भारतवर्ष में जिनका भी जन्म हुआ है सबसे पहला दायित्व उनका है। First of all, make himself perfect by understanding properly this philosophy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. सबसे पहले स्वयं को सार्थक बनाना होगा श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांत को सही तरीके से समझकर। Then go out, then broadcast it and distribute it. तब बाहर जाकर इसको लोगों के बीच बांटा जा सकता है।
And this is the duty of every Indian. और हर एक भारतीय का ये दायित्व है। This is a real dharma. ये असल This धर्म is Sanatan Dharma. ये सनातन धर्म है। To please the Lord in a mood of loving devotional service, that's Sanatan Dharma. भगवान को सुखी करना सनातन धर्म करके। So Prabhupada said, the Indian, especially in India, they have got the privilege to take advantage of the Vedic culture and the Vedic literature. तो प्रभुपाद बता रहे हैं भारतीयों को ये लाभ मिला है कि वैदिक ग्रंथों का और वैदिक संस्कृति का वो लाभ उठा सकते हैं। In other countries, there is no such advantage. और दूसरे देशों में उनके पास ये लाभ नहीं है। So if anyone wants to make his life perfect, then he has to take advantage of the vast treasure house of Indian spiritual knowledge. जो भी अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है उसे इस भारतीय संस्कृति का लाभ उठाना चाहिए। Even one Chinese gentleman, he's written one book about religion. यहाँ तक कि एक चीन के व्यक्ति ने सभ्य व्यक्ति ने एक A scholar of New York University. और वो न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय के एक बड़े विद्वान हैं। And he said, if you want to know something of religion, you have to go to India. और उन्होंने लिखा है अगर आप धर्म के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आपको भारत जाना चाहिए। And that is a fact. और ये सत्य है। If you really want to understand the absolute truth, Krishna, you have to come to India. अगर आप असल में परम सत्य और कृष्ण को जानना चाहते हैं तो आपको भारत आना होगा। Or India has to come to you. या फिर भारत को आपके पास आना होगा। Either way, you need to meet India. किसी भी तरीके से आपको भारत में मिलना होगा, भारत से मिलना होगा। So Sri Chaitanya Mahaprabhu, he has said this to every Indian. श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी भारतीयों को ये बात कही है। So there is this need of broadcasting this Krishna Consciousness movement all over the world. तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रचार पूरे विश्व में करने की जरूरत है। It is the duty of every Indian to first of all make his life perfect. ये हर एक भारतीय का दायित्व है सबसे पहले स्वयं के जीवन को सार्थक बनाए। And he must know what is perfection. What is that perfection? और उसे अवश्य ये जानना चाहिए ये सिद्धि का मतलब It क्या है। means he must know perfectly what is his eternal position. इसका मतलब उसे ये जानकारी पाने की जरूरत है उसका नित्य स्थान क्या है And what he has to do, what is his duty. और उनका क्या कर्तव्य है। So realizing that is perfection. इसका साक्षात्कार करना ही सिद्धि है। Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu requested the Indians, the Bharatiya, Bhartavash, those who have taken birth as human beings, इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु अनुरोध कर रहे हैं उन लोगों से जो भारतीय हैं भारतवर्ष में जिन्होंने जन्म लिया है because he doesn't speak to the animals. क्योंकि वो पशुओं से बात नहीं कर रहे हैं। So when Prabhupada talks about human being, he means those who are situated in Daivivan ashram system. तो जो प्रभुपाद मनुष्य की बात कर रहे हैं तो वो उन लोगों की बात कर रहे हैं जो दैवी वर्णाश्रम में स्थित हैं। So without shelter of Krishna parampara in Krishna's system, Daivivan ashram, then Prabhupada said, then you've not come to the platform of a human being. तो प्रभुपाद बताते हैं बिना कृष्ण की व्यवस्था दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था में आए बिना आप मनुष्य के स्तर पे भी नहीं आए। So without going through that gradual purification process mentioned in the Daivivan ashram system, will not be able to understand this transcendental or Shuddha Sattva information or topics. तो दैवी वर्णाश्रम व्यवस्था का अगर हम पालन नहीं करेंगे तो हम स्वयं को इतना शुद्ध नहीं बना पाएंगे कि हम इस शुद्ध सत्व के स्तर के विषयों को समझ पाएंगे। So therefore Krishna, Mahaprabhu, their devotees, Nitya Siddhas, they're coming and speaking to the human persons who are in human consciousness. तो इसलिए कृष्ण के शुद्ध भक्त यहाँ आ रहे हैं और उन लोगों से बात कर रहे हैं जो मनुष्य के स्तर की चेतना में स्थित हैं। That's why they came to Bharatavarsha. और इसीलिए वो भारतवर्ष में आए। Because that's the system that Vedic culture is Krishna culture. क्योंकि यही व्यवस्था है ये वैदिक संस्कृति है कृष्ण की संस्कृति So है। as they're going through this gradual purification and qualification process, they'll be able by mercy to understand and realize this information is specifically meant for them. तो जब वो इस धीरे-धीरे के शुद्धिकरण की वर्णाश्रम व्यवस्था को पालन करेंगे
तब वो स्वयं को योग्य बना पाएंगे अवश्य कृपा के माध्यम से इस दिव्य स्तर के विषयों And को all समझ opportunity is afforded them. The privilege of that opportunity is afforded to them from the very beginning of their life. और जीवन की शुरुआत से ही उनको ये लाभ मिला है मौका मिला है इस परिस्थिति इस संस्कृति का लाभ उठाने That's why Prahlad Maharaj said that as soon as you can, as early as you can, start this process of devotional service. इसलिए प्रहलाद महाराज ने शिक्षा दी है कि जीवन में जितनी जल्दी हो सके इस प्रक्रिया को जीवन से शुरुआत करनी चाहिए Best opportunity. ये आपको सबसे श्रेष्ठ मौका देगा And we see most of us, we join much later. और हम देखिए हम में से ज्यादातर लोग बहुत देर में So we're showing up with a lot of baggage and luggage. तो हम बहुत भारी सामान लेकर बोझा लेकर आए We've created a lot of complication for ourselves. हमने स्वयं के लिए बहुत सारी जटिलताएं Created तैयार कर ली so हैं much sinful desires and sinful activities and sinful reactions. My Guru said like the Himalayan mountains. हमने बहुत सारे पाप की इच्छाएं पाप कर्म की प्रतिक्रिया और इन सारी चीजों को हमने हिमालय पहाड़ की तरफ मान लिया Big layer. समझते थे कि मोटी-मोटी परत तमोगुण की बना ली है It's due to sinful activities, sinful reactions. पाप कर्मों की वजह से और पाप कर्म के फलों की वजह से Are you with me? Are you following? आप मेरे साथ हैं कि आप समझ You पा see रहे why I asked permission to get into more detail? Because it requires like a discussion. हैं आपने देखा कि क्यों मैं आपसे अनुमति मांग रहा था इस चर्चा के बारे में बात करने के लिए It's like a modern day podcast, तो जैसे आधुनिक व्यवस्था right? It's a discussion. We're going deeper. We're going to just go beyond just a couple quick questions and answers, right? तो हम जो है और गहराई में जाने का प्रयास करेंगे अपनी चर्चा में और कुछ छोटे-छोटे Everybody is सवाल so bored with all this quick, useless discussion. Now they want a podcast. They want a discussion. They want to go deeper, right? That's a good sign. तो सभी लोग What बहुत they're hearing, that's another point. बहुत बोर हो चुके हैं सिर्फ या फिर वो बहुत गहराई में जाना चाहते हैं But if they can do podcasts and establish the absolute truth, then that's a very nice podcast. That's perfection of podcasts. It's like a live interview was being televised, it's being captured. On the internet. तो He's a brahmachari. That's a good sign. He doesn't know yet what is a podcast. ये अच्छा संकेत है ब्रह्मचारी को पता ही नहीं अभी तक ये पॉडकास्ट का मतलब क्या होता है We're gonna have to like protect him, put him in a room and cage him up. No electronics, nothing. Keep the simple life, Baba. हम इनको कमरे में बंद कर देंगे कोई फोन नहीं कोई इंटरनेट नहीं कुछ भी नहीं सीधा साधा जीवन बिताएंगे And Mayapur pretty soon will be riding on a Harley Davidson with phone. Brahmachari, you know. मायापुर में बहुत ही चल रही है ब्रह्मचारी हार्ले डेविडसन और फोन लेकर चलाना शुरू कर Make your life perfect. जीवन सफल बनाने की तरफ आगे जा रहे हैं Then go to the west. फिर वो फिर जाएंगे I'm gonna get in trouble. मुसीबत में पड़ना There's a lot of buildings going up here by the brahmacharis. I'm just saying. यहाँ बहुत सारी जो इमारतें खड़ी हो रही हैं बहुत सारे ब्रह्मचारी बना रहे हैं I don't know how these brahmacharis are building all these buildings. पता नहीं ये ब्रह्मचारी ये इमारत कैसी खड़ी कर रहे हैं Maybe money's flying out of the sky or something. मुझे लगता है Maybe ऐसे they're praying so purely that they're finding it like on the ground. मुझे लगता है वो इतनी गहराई से प्रार्थना कर रहे हैं कि पैसे या तो आसमान से गिर रहे हैं Trees. या पेड़ से तोड़ रहे हैं Anyway, कोई बात see how I can get distracted? नहीं अभी कितना जल्दी मैं भटक जाता हूँ So this is a very nice meditation because it's very systematic. Everything from how and why the Lord comes here and how, according to time, place, circumstance, candidate, everything is being executed in a very perfect and practical, scientific, means and process. तो आप देखिए ये भगवान और उनके भक्तों ने ये जो प्रक्रिया दी है ये कितनी सही व्यवस्था है देश का समय पात्र और शिष्य के आधार पे ये बिल्कुल सही तरीके से काम करती है So when the Lord and His devotees come from Krishna Loka, they come to Bharatavarsha, they come to India. तो भगवान के भक्त जब अवतार लेते हैं तो वो भारतवर्ष में आते हैं And again, even Krishna, Mahaprabhu, the devotees, they didn't go to the other country. कृष्ण महाप्रभु के भक्त उस समय तक बाहर के देशों में नहीं गए थे And Prabhupada said even
Goswamis, they wrote all the literature, they also preached in Vrindavan. और प्रभुपाद ने बताया जो गोस्वामी ने जितने साहित्य लिखे हैं ये भी केवल वृंदावन में रहते थे. Then that made me to think that all these different processes from the Vedic culture in the Vedas, it's all how to go to the heavenly planets, right? और फिर आप जब देखेंगे कि वेदों में इतनी सारी प्रक्रियाएं बताई गई हैं, इनका पालन करके कैसे आप स्वर्ग के लोकों में जा सकते हैं, इसके बारे में बताया गया है. Right? How to go to this different, what is it, Brahmaloka and what are all Siddhaloka, all of these high Chandaloka, right? Higher planetary systems. ये जो अलग-अलग लोक हैं, ब्रह्मलोक, चंद्रलोक या ऐसे अन्य तरह के लोकों में जाने का तरीका बताया गया है. Right? Or how to practice these, the Vedas, how to go to Vaikuntha. या फिर कैसे वेदों का अभ्यास करके आप वैकुंठ लोक में जा सकते हैं. So that means, I was thinking about this whole topic, I'm saying that means that there's no Americans and Russians and Europeans in the heavenly planets. मैं फिर सोच रहा था इसका मतलब अमेरिका के लोग, रूस के लोग और यूरोप के अन्य देशों के लोग यानी कि वो स्वर्ग के लोगों में नहीं जाते हैं. That's why a lot of Indians want to go there. इसलिए बहुत सारे भारतीय वहाँ जाने का प्रयास, अमेरिका जाने का प्रयास करते हैं. Then you can just associate with like-minded people. तो जो अपने जैसे एक जैसे मन वाले लोगों के साथ वहाँ साथ कर रहा है. I met this Indian man in the airport. He said, "Oh, you're from America," and I said, "Yeah, but I hate America. I told you that yesterday, right?" तो जैसे कल He said, "Yeah, me too." जैसे मैं बता रहा था कल मैं एक व्यक्ति से मिला एयरपोर्ट में भारतीय व्यक्ति से और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अमेरिका से हैं तो मैंने कहा हाँ मैं अमेरिका से हूँ लेकिन मैं अमेरिका से नफरत करता हूँ. And they're very boring people. अमेरिका के लोग बहुत बोरिंग लोग हैं. And I agreed. I said, "It's true. That's why I came to India." मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे इसलिए मैं I already saw everything over there. मैं अमेरिका में सब कुछ देख चुका हूँ. We came here for spiritual. हम भारत में We आध्यात्मिक already जीवन tried में everything materially क्योंकि हमने सब कुछ भौतिक तरीके से करने का प्रयास किया to the maximum, जितना ज्यादा हम कर सकते थे and just got completely burnt out और हम जब पूरी तरह से जल गए वहाँ and fried out. Why did you move the camera instead of the man? आदमी को Can't the camera move and give him some? Huh? Is that all right? ठीक है. Right? He's like, "My camera's in the way of this guy," and I'm thinking, no, the camera's in the way of the guy, not the guy's in the way of the camera. Devotee. मैं ये सोच रहा था कि मेरे कैमरा के सामने ये रुकावट ये भक्त आ गए लेकिन नहीं वो भक्त ये कैमरा रुकावट आ गया इस भक्त के बीच में. Can you see you still have your shot? अभी भी आपको सही शॉट मिल रहा है. And this devotee can be peaceful and just listen nicely. Right? और ये भक्त आराम से बैठे शांति से सुन. That's good. We're making progress. ये अच्छा है हम अभी आगे बढ़ रहे हैं. I'm too sarcastic. Please excuse me. मुझे क्षमा कीजिएगा मैं बहुत व्यंग्य करता हूँ. This is some bad habit I have. ये मेरी एक बुरी आदत है. But I think if we don't laugh once in a while, it's going to be tragic. अगर हम बीच में थोड़ा हंसेंगे It's going to get boring. तो बहुत बोरिंग होगा. So this means that this information is for human beings. तो बस इसका मतलब ये जानकारी मनुष्यों के लिए है. And of course, everyone's in a human body. We say, well, we're all human beings. और जो भी देखते हैं मनुष्य के शरीर में हम ये कहते हैं हम सारे मनुष्य हैं. But it's a question of what is our consciousness. लेकिन प्रश्न ये हमारी चेतना क्या है. My Gurudev Srila Govinda Swami said, you're like a two-legged animal. मेरे गुरुदेव श्री भगवान जी महाराज कहते थे कि आप The दो only पैर पे difference, you चलने don't वाले have जानवर any हैं. horns and you don't have any tail. एक ही मात्र अंतर है आपको दो सींग नहीं है एक पूंछ नहीं है. But consciousness is same. लेकिन चेतना बिल्कुल वैसी है. So two-legged animal. दो पैरों पे चलने वाले जानवर हैं. Sorry to disappoint you. क्षमा कीजिएगा मैंने आप लोगों को. Some of us are so dull, we're like, can I get some horns? That would be cool. अगर आप बीच में कुछ ऐसे बुद्धि वाले लोग हैं सोचते हो मेरा दो सिंग और दो पूंछ भी हो सकता है ये बहुत अच्छा होता है ऐसा होता. Then I'd be different. Everyone would say, wow, he's different. तो मैं थोड़ा देखने में अलग लगता हूँ. लोग कहते हैं यार आप थोड़ा अलग लगते हैं आपकी पूंछ भी है. That's how callous we are, you know. तो इतने हम जड़ बुद्धि वाले हैं. Even sometimes they spend, this seriously, even they spend like tens of thousands of dollars to get like a suit where they can walk around like in some AI as like a dog. तो लोग जो है Honestly, I saw this.
हजारों लाखों some Japanese guy, you know. एक जापान के व्यक्ति थे, उन्होंने हजारों लाखों करोड़ रुपए दिए थे एक विशेष तरह का कपड़ा बनवाने के लिए, जिससे वो बाहर से देखने में ऐसा लगता है वो कोई इस तरह का कुत्ता है। So electronic, like dog body, you know. ऐसा लगता था कि It's वो like I identify with the dog, you know. वो जो बाहर से ऐसा लगता था कि कोई कृत्रिम कुत्ते का I शरीर है, always उन्होंने ऐसा wanted to कपड़ा have a बनवाया। dog body, you know. कहते थे हमें हमेशा कुत्ते के जैसा शरीर चाहिए। This is true. I'm not making this up. ये सच्ची घटना है, मैं खुद से Right? So here you are in a human form of life, and you're praying for a dog body. यहाँ वो परिस्थिति है, वो मनुष्य के शरीर में और कुत्ते के शरीर के लिए प्रार्थना करते हैं। And basically, someone should just kill him because then he could probably just his desires would bring him back as a dog, right? He could save the money on the fake suit. ज़्यादा अच्छा होगा कोई व्यक्ति जाके उनको मार डाले, तो उनकी जो इच्छा है पूरी हो जाएगी, उनको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा, तो इनको इतने पैसे जो खर्च किए बनावटी कपड़ा बनाने के लिए कुत्ते का, वो नहीं खर्च। His wife should have said, no problem, you know, hire an assassin, get rid of the guy, he gets to be a dog, and she gets to get the money that was going to be wasted on the dog suit, you know what I mean? So it's all good, it's all even in the end, you know. Everyone gets what they desire. तो उनकी पत्नी कहती कि मैं किसी हत्यारे को लेकर आऊंगी, वो इनको गोली मार दें और ये मर जाएंगे और सारे पैसे बच जाएंगे और उनको कुत्ते का शरीर मिल जाएगा पूरा जीवन का। Oh, Prabhupada says here, the cats and the dogs, कुत्ते और बिल्लियों के बारे में they cannot understand. वो लोग समझ नहीं पाते। So a person whose behavior is like cats and dogs, he cannot understand. जिस मनुष्य का व्यवहार कुत्ते और बिल्ली के जैसा है, वो भी इसको समझ नहीं सकता। So when Prabhupada saw all of the hippies, he said these like they're shameless. They're having sex on the side of the road like cats and dogs. प्रभुपाद ने जब इन हिप्पियों को देखा, उन्होंने कहा ये कितने बेशर्म लोग हैं, ये कुत्ते बिल्ली की तरह सड़क के किनारे यौन संबंध बनाए। Completely shameless. This is animal consciousness. पूरी तरह से बेशर्मी है, पूरी तरह से जानवर वाली चीज। So what are they going to understand about the transcendental Shuddha Sattva, you know, topics and personalities and activities and philosophy from Vaikuntha? तो ये लोग की क्या चेतना है जो दिव्य स्तर की, शुद्ध सत्व के स्तर की व्यक्तित्वों की, उनके कर्मों के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में कैसे समझ पाएंगे? Therefore, okay, human form of life, which is meant to go to higher consciousness. Okay, be born in India, be born in Bharatava. मनुष्य जीवन मिला है उच्च चेतना को ऊपर उठाने के लिए, तो भारतवर्ष में जन्म And you लिया have the Vedas, वहाँ को you वेद have मिलेंगे, Bhakta Bhagavata, Bhakta Bhagavata. यहाँ पे ग्रंथ भागवत है, भक्त You have भागवत है, Bhagavan, Bhakta, Bhakti, everything is manifested there. भगवान भक्त भक्ति सब कुछ यहाँ All प्रकट है। opportunity is offered to you आपके सामने सारे आपको मौके दिए जा रहे हैं from the beginning of the life. जीवन की शुरुआत से ही। And therefore, you have all the Vedas, you have all the systems, all the processes of qualification and purification. यानी आपके पास पूरा वेद है, सारी व्यवस्था है, कैसे आप स्वयं को धीरे-धीरे शुद्ध बना सकते हैं, And education, और एक सही शिक्षा है, and all the different yugas, all the different dharmas, and all of the different yugas, all this different system of purification and qualification is being offered in the Vedic system. और केवल इस वैदिक व्यवस्था में ही हर एक तरह के युग में, हर एक समय में इस शुद्धिकरण की प्रक्रिया वेद के माध्यम से बताई गई है। That means all of that information is meant for persons who are in human consciousness, यानी कि ये सारी जानकारी उन व्यक्तियों के लिए है जो मनुष्य की चेतना में, or who are in a process to come to human consciousness. या वो जो इस प्रक्रिया में है, जो मनुष्य की चेतना में आ सकते हैं। And that's why when Srila Prabhupada was on Jaladuta, he was praying to Krishna that how will these people who are in the Tamagun, Rajagun, and completely involved in sinful life and enjoying their senses, how are they possibly going to accept this and understand this? तो श्री भगवान जब जलदूत से जा रहे थे, तो वो कृष्णा से प्रार्थना कर रहे थे, ये लोग जो पूरी तरह से तमोगुण में हैं, रजोगुण में हैं, पाप कर्म का जीवन चला रहे हैं, इंद्रिय भोग में लगे हैं, कैसे वो इस तरह के शुद्ध सत्व श्रीमद् भागवतम को समझ पाएं? And even in the beginning of Srimad Bhagavatam, it's explained. I think Shukadeva Goswami is saying this book are for those people who not only want to become liberated or to the platform of moksha, but beyond that to the platform of
bhakti, Shuddha bhakti, prem bhakti. और श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में ही शुभदेव गोस्वामी ने ये बताया भी है कि श्रीमद् भागवतम उन लोगों के लिए है जो न तो केवल मुक्ति पाकर मोक्ष पाने तक बल्कि उससे भी ऊपर कैसे भगवान की भक्ति में लगना चाहते हैं, ये प्राप्ति करना चाहते हैं। So dharma, artha, kama, moksha, bhakti. This purushartha, potential goals, right? तो धर्म अर्थ काम मोक्ष भक्ति ये पुरुषार्थ है। Dharma, religiosity, right? Economic development. धर्म अर्थ उन्नति, Sense gratification. इंद्रिय तृप्ति, Then moksha. और फिर मोक्ष। Then parama purushartha means bhakti, prem bhakti. और परम पुरुषार्थ मतलब भक्ति। Right, so there's a system, there's a process. तो ये व्यवस्था है, एक प्रक्रिया है। That's delivered in Bharatavash according to the Vedas in the Vedic culture. तो ये केवल भारतवर्ष में प्रदान किया गया वैदिक संस्कृति में। That's why they have such a responsibility. इसीलिए भारतीय लोगों And also all the बड़ी जिम्मेदारी different rules, regulations, processes of purification and education. In all of the yogas, in all of the processes, everything is being offered there gradually, gradually. इसीलिए सभी अलग-अलग तरह के नीति, नियम, शिक्षाएं, संस्कृति अलग-अलग युगों में प्रदान की गई इस प्रक्रिया में बढ़ने के लिए। And then at the end of all of that, then Krishna comes and speaks Bhagavad Gita in the end of Dwapar Yuga. और इतना सभी नहीं बल्कि कृष्ण द्वापर युग के अंत में स्वयं आए श्रीमद् भागवत गीता बोलने के लिए। And Krishna is also speaking to the Indians. और कृष्ण भी भारतीय लोगों को ही प्रचार कर रहे हैं। Right? He's speaking to Arjuna, through Arjuna, to the rest of mankind. तो वो अर्जुन को बता रहे हैं, अर्जुन के माध्यम से सारे मनुष्य जगत को। But then he's saying, Savadam and Pritijam Amakam Sharanam Braja, abandon all of these other previous processes. और फिर वो कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे अन्य धर्मों को परित्याग करके केवल मुझे शरणागत करो। So why would all of those things, all those systems and purification and qualification and education and religiosity, at the end of all of that, then Krishna says, okay, forget about that, all those different gradual processes. तो कृष्ण ने इतनी सारी व्यवस्थाओं को बताने के बाद शिक्षा की व्यवस्था, शुद्धिकरण, योग्यता पाने की प्रक्रिया, अंत में उन्होंने कहा इन सारी प्रक्रियाओं को त्याग कर दो। Just surrender to me. केवल मुझे शरणागत करो। Because Kali Yuga is coming. क्योंकि कलियुग आ रहा है। You see, in Kali Yuga, there's no qualification here. कलियुग में कोई योग्यता नहीं। Such a degraded, sinful age, Kali Yuga. ऐसा पतित पापमय युग है कलियुग। Everyone, Kalau Shudra Sambhava. सभी लोग कलाउ शूद्र। Everyone is born as Shudra or less. सभी का जन्म शूद्र या उससे नीचे हुआ है। That's why it says, Vaishnava song says, we have no karma, no jnana, no yoga, no bhakti, nothing. इसलिए वैष्णव गीत में बताया गया है हमारे पास कोई कर्म है, ज्ञान है, योग, भक्ति कुछ भी नहीं। So there is no qualification. तो कोई योग्यता नहीं है। So it's simply based on mercy. तो केवल ये कृपा पे आधारित है। Because there's nothing really we can do through any system. तो यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम किसी व्यवस्थित तरीके से भी कर पाए। Because there's no sufficient qualification. क्योंकि कोई पर्याप्त योग्यता नहीं है। That's why Krishna comes again as Mahaprabhu. इसलिए कृष्ण वापस आए महाप्रभु के रूप में। And he freely distributes और उन्होंने मुफ्त में to people who don't deserve it, who have no qualification for what it is that he's trying to give to them. उन लोगों को जिनके पास कोई योग्यता नहीं, जो उसके लायक ही नहीं थे, उनको ये बांटने के लिए। Are you with me? क्या सब मेरे साथ हैं? Are you awake? क्या आप जगे हुए हैं? So therefore, cats and dogs cannot understand. It's meant for humans. इसलिए कुत्ते बिल्ली समझ नहीं सकते, ये मनुष्यों के लिए। First become a human. पहले एक मनुष्य बनिए। Right? Isn't one famous actor in India said becoming human? He's always talking about being human. तो एक भारत में एक प्रसिद्ध कलाकार हैं जो हमेशा Mr. Khan. being human की बात करते हैं, मनुष्य बनना Be चाहिए। human, like it's some cool thing. being human जैसे कोई बहुत अच्छी बात It's है। like going to the cats and dogs and saying, man, just be human. You know? जैसे कुत्ते बिल्ली के पास जाकर आप कहेंगे मनुष्य बनो, जैसे इससे सब समाधान हो जाएगा। So therefore become perfect human,
Become perfect gentleman and lady, Prabhupada said. बात बताते हैं सभ्य मनुष्य महिला So how is the most degraded, sinful people, Yavanas and Malechas, तो कैसे in सबसे the deepest modes of tamagun, how are they going to become perfect gentlemen and perfect lady? You explain that to me. कैसे सबसे पतित पापी लोग जो जिनके पास कोई योग्यता नहीं है ये लोग कैसे स्वयं को उठा सकते हैं कि आप मुझे बताइए कौन सी प्रक्रिया है No karma, no jnana, no yoga, no bhakti, no qualification, कोई कर्म नहीं कोई not even human consciousness, यहाँ तक कि मनुष्य की चेतना भी नहीं है doing drugs, नशा कर रहे rolling हैं on the ground like cats and dogs, जमीन में उलट रहे हैं shamelessly. बेशर्म की तरह And Prabhupada said, my goal is to make you perfect gentlemen and perfect ladies. बात करें मेरा लक्ष्य है आप लोगों को एक पूर्ण सभ्य व्यक्ति महिला और पुरुष बनाना How is it possible? That means sattva-gun. इसका मतलब सत्व गुण की बात So how are you going to get from tamagun to sattva-gun? तो कैसे आप तमोगुण से सत्वगुण में जा सकते हैं By your sadhana? आपके साधना के द्वारा By your study of the scriptures? आपके ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम By से your own kind of educational or academic approach? आपके खुद की शैक्षणिक योग्यता और Or उसके mental क्षमता के speculation? अपने मनोधर्म की शक्ति के आधार पे Pious activity? पुण्य कर्म के आधार पे Sukriti? We don't have any. Prabhupada said, I'm creating your sukriti. सुकृति हमारे पास सुकृति नहीं प्रभुपाद कह रहे थे मैं आपकी सुकृति बना रहा हूँ So that's why, and especially in Kali Yuga, it's completely based on mercy. इसीलिए विशेष कलयुग में ये पूरी तरह से कृपा पे आधारित है Because Mahaprabhu is giving the highest thing to the least qualified people. क्योंकि महाप्रभु सबसे ऊंची चीज सबसे कम योग्यता वाले लोगों को दे रहे हैं That's why Krishna said, just abandon everything else. Just try to surrender to Krishna. इसलिए कृष्ण ने कहा सब कुछ त्याग करो और केवल कृष्ण को शरणागत करने का प्रयास करो Because you can't understand or do anything else. क्योंकि आप कुछ भी ना तो समझ सकते हैं ना कर सकते हैं That's why Mahaprabhu made it so simple in the Kali Yuga. इसलिए महाप्रभु ने इसे इतना सरल बना दिया कलयुग में All he said, okay, whatever position you are in your life, उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता आप जीवन की कौन सी स्थिति just में come, do sadhu sangha, hear Hari-Katha Krishna-Katha. बस आइए साधु संग कीजिए कृष्ण कथा हरि नाम श्रवण कीजिए Shravanam, Kirtanam, Krishna-Smam. कीर्तनम विष्णु When स्मरण Prabhupada went to Europe and he saw all of these people, they're like completely insane, mad, because of drugs and their sinful activity. जब प्रभुपाद यूरोपीय देशों में सफर कर रहे थे उन्होंने देखा ये लोग पूरी तरह से नशे में हैं और ये जब आम्स्टरडम में गए थे They have like maybe 2 brain cells left. उनके दिमाग की हो सकता है दो ही कोशिका बची है And they're not connecting. और वो भी जुड़े नहीं पा रहे Like 2 floating there, but disconnected. दिमाग में दो जो कोशिकाएं तैर रही थी लेकिन अभी वो भी जुड़ी हुई नहीं So when Srila Prabhupada saw these people, he said, don't even try to preach to these people. You cannot preach to these people. तो श्री प्रभुपाद ने जब इन लोगों को देखा उन्होंने कहा इन लोगों को प्रचार करने का प्रयास भी मत करना इनको प्रचार नहीं किया Even the animals look more sane, you know. यहाँ तक कि जानवर भी उनसे ज्यादा समझदार At least they know what they're doing. You know? कम से कम जानवरों को पता होता है वो क्या कर These रहे people have no idea what are they doing. हैं इन लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं है ये लोग क्या कर रहे हैं That's how out of it they are, you know. तो इतने ज्यादा वो Now you see in America and in Europe, all this drug abuse with this fentanyl and all of these heavy narcotics, right? The people are literally like, they look like zombies, standing in the middle of the road. They cannot even move. They're just standing there. और अब अगर आप अमेरिका के विदेशों में देखेंगे वहाँ इतनी भारी भारी नशीली चीजें मिलती हैं लोग ऐसा नशा करते हैं कि वो मुर्दे की तरह रोड सड़क के बीचों बीच खड़े रहते हैं हिल तक नहीं पाते समझ नहीं आता क्या करना है At least a dog or a cat, hey, get out of here. They just run away. They don't even know you're even present. कुत्ते बिल्ली का कहेंगे चलो भागो तो भट्टा बिल्ली भी भाग जाएगा ये व्यक्ति को तो कुछ बोलेगा तो समझ भी नहीं आएगा कि वो क्या कह रहे हैं So you're going to explain, you know, you're going to explain what's happening in Vaikuntha? You're going to shoot us up the platform to this person?
ऐसे लोगों को वैकुंठ की बात समझाएंगे कि वैकुंठ में क्या हो रहा है, शुद्ध सत्वस्त्र में क्या हो रहा है। And then even he wakes up, he says, I really just want to be a dog. अगर वो उसे जाग भी जाता है तो भी यही कहता है कि मैं कुत्ता बनना चाहता हूँ। Dogs are so nice. कुत्ते बहुत अच्छे They're हैं। better than humans, you know. मनुष्य से ज़्यादा बेहतर होते हैं। Many times people say like that. कई बार लोग ऐसा कहते हैं। So this is the environment. ये हमारा वातावरण है। So if anybody needs special mercy, it's us. अगर किसी को विशेष कृपा की जरूरत है तो वो हम लोग हैं। Isn't it all about Srila Bhakti Vinod Thakur's song? You're the savior of the most fallen souls. श्री भक्ति विनोद ठाकुर के आप गीत सुनेंगे उसमें कहेंगे वो कि आप सबसे पतित जीवात्माओं के रक्षण करते And we are the most fallen souls. और हम सबसे पतित जीव हैं। We're completely beggars of mercy. हम पूरी तरह से कृपा के भिखारी हैं। Now you see why I asked your permission for this longer presentation? तो आप देख पा रहे हैं मैंने क्यों आप लोगों से अनुमति ली थी इस लंबी चर्चा में घुसने से पहले। Are you with me? You all right? You're not getting mad at me or frustrated or anything like that? मुझे पागल तो नहीं हो रहे हैं मुझ पे या मुझसे हताश तो नहीं हो रहे हैं। You had a nice prasad I heard today. मैंने सुना आप लोगों ने प्रसाद दिया है, अच्छे से आराम किया सबने। So you guys are all right. आप सभी ठीक You're not हैं, gonna die. कोई मरने नहीं वाला है। You talk a little philosophy now. हम थोड़ी सिद्धांत की बातचीत करेंगे। So Mahaprabhu, he simply said, that he wanted to deliver everybody in every town and village all over the world. But he was expecting in later days that his followers would do that. तो महाप्रभु ने अपनी अपेक्षा रखी थी कि वो हर एक ग्राम नगर शहर में पूरे विश्व में लोगों को मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए काम छोड़ा। So that attempt was made by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. और ये प्रयास श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने That he went outside of Bharatavarsha. वो भारतवर्ष के बाहर उन्होंने जाना And Bhaktivinoda Thakur, he also desired that with Mahaprabhu's messages, you have to go out and just reach every town and village, then the East and West would be accepted equally. Both Indians and Europeans, Americans, Russians, they should all dance together in ecstasy in Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. श्री भक्ति विनोद ठाकुर की भी इच्छा थी कि पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु के संदेश का प्रचार हो और अमेरिकी, भारतीय, रूसी और विश्व के सभी देशों के लोग एक साथ मिलकर कृष्ण के नाम में आनंद से भाव विभोरों का कीर्तन करें। And that was Bhaktivinoda Thakur's very strong desire. और श्री भक्ति विनोद ठाकुर की ये बहुत ही That was his ambition. ये उनका उद्देश्य था। And that was the ambition of Sri Chaitanya Mahaprabhu. और यही श्री चैतन्य महाप्रभु का भी उद्देश्य था। And Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he took up this work, this affair, और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये काम करने का बीड़ा उठाया। this business, and he wanted this first of all. और ये काम करना उन्होंने शुरू किया सबसे पहले। How to fulfill the desire and the ambition of Sri Chaitanya Mahaprabhu and his guru, Srila Bhaktivinoda Thakur. कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा को पूरा की जा सके उनकी भविष्यवाणी को और अपने गुरुदेव की इच्छा को। So every student, every disciple, तो हर एक शिष्य that he met, जिनसे भी वो मिले, that जिनको he उन्होंने saw पाया, that they were competent, they had some qualification, जिसके पास भी देखा किसके पास कुछ भी योग्यता है, he would immediately say, you take up this mission of Sri Chaitanya Mahaprabhu. तुरंत उनको कहते थे आप इस श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को स्वीकार And कीजिए you preach it in the Western countries. और आप विदेश में जाकर इसका प्रचार कीजिए। And that was Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, that was his first attempt, how to do it. और ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सबसे पहला प्रयास था इसको कैसे पूरा किया जाएगा। Before that, even the acharyas, Rupanuga, the six Goswamis, they left the literatures, but they did not attempt to preach practically. तो यहाँ तक कि ये रूप गोस्वामी और ये सारे गोस्वामी ने ये साहित्य लिखे, लेकिन उन्होंने व्यवहारिक तरीके से पालन करके लोगों को ये नहीं दिखाया। And Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he was very, very anxious how to preach this Chaitanya cult in the Western countries. और श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत व्याकुल थे इस चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति को पाश्चात्य देश में कैसे फैलाया जाए। And this is Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. This is his special contribution. श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये विशेष योगदान है।
So this hit me very hard when you're thinking, okay, how can we try to glorify Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur? तो ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इस बात ने प्रभाव And Srila Prabhupada is explaining what is the mission of his guru to fulfill the desire of his guru and Sri Chaitanya Mahaprabhu. श्रील प्रभुपाद इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि उनके गुरु और श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या इच्छा थी, कैसे हम उनकी इच्छा को पूरा करके उनको सुखी कर सकते हैं. Therefore, he was very, very anxious how to spread this cult of Chaitanya in all of the countries all over the world, especially Western countries. बहुत व्याकुल थे श्री चैतन्य महाप्रभु के इस संस्कृति का पूरे विश्व में प्रचार करने के, विशेष करके पाश्चात्य देशों में. So Prabhupada saw that when he met his guru Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, then immediately. तो जब प्रभुपाद श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर This is always my story. देखा, ये बहुत ही अच्छी कहानी है. You're all right? सब ठीक है? आप ठीक हैं? Prabhupada says, when I met Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, it's a long story how I met him, but one of my friends, he dragged me there. तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से जब मैं मिला, तो ये कहानी लंबी है, लेकिन लंबी को छोटी करके मैं कहता हूँ, मेरे एक मित्र मुझे खींच कर उनके पास ले गए. Prabhupada was laughing, you know. My friend had to drag me there to meet Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. ये मेरे मित्र मुझे खींच कर ले गए श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने के लिए. Srila Prabhupada says, at that time, I was a nationalist. उस समय मैं एक देशभक्त था. And I was the manager in a big chemical factory. और एक बहुत बड़े रसायन के फैक्ट्री में मैं मैनेजर था. And my age was 24 years old. और उस समय मैं 24 साल का था. How old are you? आप कितने साल के हैं? 38. You see what Prabhupada was doing? What are you waiting for? तो कह रहे मैं 28 साल का हूँ. आप देखिए He was 24 साल already के a बाद nationalist. He was running a big chemical factory. वो पहले से एक देशभक्त है और इतने बड़े रसायन के Nationalist. उद्योग को चला रहा है. क्या आप एक कम से कम देशभक्त हो? आप कम से कम इनके साथ में आपको आगे आना होगा. So one of my friends, he asked me, oh, this very nice sadhu, this Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He has come to Calcutta. तो मेरे एक मित्र ने मुझे कहा एक बहुत ही अच्छे साधु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती वो कलकत्ता में हैं. So let us go and see him and meet him. चलिए हम जाते हैं उनसे मिलते हैं. And so I was reluctant. लेकिन मैं पहले मिलना नहीं चाहता था. And I thought, there are so many sadhus. और मैंने सोचा बहुत सारे साधु हैं. This sounds very familiar. सुनने में बहुत I've heard this story before. ये कहानी There's so many sadhus, so many gurus. बहुत सारे साधु, बहुत I'm सारे not गुरु. very much impressed by that. मैं उनमें से किसी से बहुत प्रभावित नहीं I'm हूँ. not so satisfied by them. उनमें से किसी से भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ. Because I had very bad experience with all of them before. क्योंकि उन सभी के साथ मेरा बहुत बुरा अनुभव रहा. It was not very good. कोई अच्छा अनुभव नहीं रहा. So I said, oh, these kinds of sadhus, there are so many of these types of people. तो बात कर रहे हैं, मैंने कहा कि इस तरह के साधु बहुत सारे हैं. Every corner. हर एक कोने में आपको ऐसे साधु Every मिलेंगे. corner. हर एक कोने में. But you'll be glad. It's very controversial. The truth is controversial. सत्य हमेशा विवाद होगा. Let's be honest. ईमानदारी से. Everyone wants to be the seeker of the truth until you hear the truth. सभी लोग सत्य खोज करना चाहते हैं. सत्य सामने आना. Okay, you know. I have my truth, you have your truth. आपका अपना सत्य है, मेरा अपना That's सत्य. where they come up with all this philosophy. When you're narrowing down what is the truth, it's okay, that's your truth, that's not my truth. अंत में ये सिद्धांत आ जाता है जब आप गंभीर से करने लगते हैं तो वो आपका सत्य है, ये मेरा सत्य है. Everyone's got their own truth. सभी का अपना अपना सत्य होता है. Truth is truth, eternally. You can't say it's my truth, your truth. सत्य हमेशा सत्य होता है, नहीं फिर होता है. आप ये नहीं कह सकते ये आपका सत्य है, मेरा सत्य है. Modern psychology. ये है आधुनिक. That's why Prabhupada said this is nonsense. मनोविज्ञान. इसे प्रभाव कहते हैं ये सब फालतू चीजें. Right? And then we have people who want to be a professional psychologist in this corner. हमारे इस्कॉन में अभी पेशेवर मनोवैज्ञानिक लोग बनना चाहते हैं. Anyway, that's a whole nother topic. ये एक और अलग विषय है. Mataji, are you awake back there? माता जी आप पीछे. Are you holding up that wall? क्या आप उधर दीवार Are से you making sure that wall doesn't land on all the rest of the devotees? क्या आप दीवार को टिका कर बैठे Are हैं और you दीवार doing a बाकी भक्तों पर seva रखी है. for the devotees? आप भक्तों के लिए वो सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं. Don't fall asleep. अब सोइएगा मत. Alright. ठीक है. Huh?
All right, I'm just checking. मैं बस चेक कर रहा हूँ Because you're just like couple steps from the door, so your mind might be like, you know, क्योंकि आप दीवार से how long is this podcast going to go on? दरवाजे के बहुत नजदीक बैठे हैं तो पता नहीं ये जो पॉडकास्ट कितनी देर तक चलेगा And she's old, she's like old lady, इतनी बुरी हो चुकी है she's feeling old right now. अभी उनको थोड़ा बुढ़ापा महसूस हो रहा है So we have to help her to transcend the body, because the soul's not tired, soul's not old. उनकी मदद करनी होगी शरीर के असर से बाहर आने के लिए क्योंकि They आत्मा write बूढ़ा नहीं songs है forever आत्मा young, थकता नहीं है forever young. और गाने भी ऐसे हमेशा चला रही है So Prabhupada said, you'll be glad to know that even in my young age, भगवान ने बता यहाँ तक कि अपनी युवा अवस्था में भी I'm not making this stuff. मैं खुद से ऐसा नहीं बना रहा I'm just going with the flow. जैसा भगवान ने उसी के साथ बढ़ रहा हूँ मैंने देखा भी नहीं You'll be glad to know that even in my young age, अपने को बहुत खुशी होगी ये जान के कि अपनी जवानी में भी and it was Krishna's grace that even amongst my young friends, और कृष्ण की कृपा से मेरे सारे जवान दोस्तों के बीच में भी Prabhupada talking, प्रभुपाद बता रहे हैं I was young, even amongst all of my friends, मैं जवान था और मेरे सारे दोस्तों के Prabhupada बीच में says, I was considered the leader. प्रभुपाद कह रहे थे कि मुझे लोग लीडर मानते थे And Prabhupada laughed. प्रभुपाद हंसने He लगे said, I was always the leader. मैं हमेशा नेतृत्व करता था नेता रहता In my school days, my college days, था मेरे स्कूल के my समय में private life, friendship, some way or other, every time I was always the leader. कॉलेज के समय मेरे दोस्तों के बीच हमेशा मैं जो है नेता रहता था So it makes sense, right? That Prabhupada should do what he's doing. और ये बहुत बिल्कुल सही लगती है बात And even Prabhupada says, one astrologer, sometime he came and he read my hands. प्रभुपाद ये भी कहा कि एक बार एक ज्योतिषी जो हमारे घर पर आया उन्होंने मेरी हाथ की रेखा देखी And he said in Hindi, और प्रभुपाद बता रहे उन्होंने हिंदी में मुझे कहा Kukum chalena. Kukum chalena? हुकुम चलेगा Kukum chalena means your hand speaks that your orders, whatever you order, will be executed. तो हुकुम चलेगा का अर्थ है कि जो भी आप कहेंगे वो सभी लोग पालन करेंगे उसका I have to help him. He's my Hindi translator. मुझे इसकी मदद करनी होगी ये मेरा हिंदी अनुवादक है What is this world coming to? तो जगत में क्या हो रहा है He's really locked up over the ashram, huh? हम आश्रम में लगता है बंद करके रखा है That's good. Keep him there. Protect him from Maya. तो उन्हें बंद रखिए माया से बचा कर रखिए So Prabhupada said, anyway, this was all Krishna's grace that I would, what was it? It was Krishna's grace. Oh, it was Krishna's grace because his friends were saying, I need you to come because I need you to tell me as the leader, is this person actually sadhu guru? Is he really bona fide? So they're depending on Prabhupada to come to tell them, is he really guru? तो प्रभुपाद कह रहे कृष्ण की कृपा थी कि मेरे दोस्त मुझे नेता समझते थे तो मेरे मित्र मुझसे सलाह मांगना चाहते थे कि ये व्यक्ति असल में साधु है कि नहीं हमें इनसे कुछ बातें सुननी चाहिए नहीं तो मेरी सलाह मांग रहे थे वो Because they trusted Prabhupada's intelligence and his ability to know best. क्योंकि वो प्रभुपाद की बुद्धि और उनकी क्षमता को वो जानते थे कि ये सबसे हमें सही चीज बता सकते हैं So they would not go unless I went to certify whether this was actually a sadhu or not. तो वो लोग तब तक उनके पास नहीं जाने वाले थे जब तक मैं उनको प्रमाणित नहीं करता कि ये व्यक्ति साधु है या नहीं Otherwise, they would not accept Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. They would not accept him unless I certified him. तो वो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को स्वीकार नहीं करते जब तक मैं और श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर को प्रमाणित नहीं करता Therefore, my friend, he dragged me there. इसलिए मेरा मित्र मुझे वहाँ खींच कर ले गया So you could say, Srila Prabhupada saying, you know, because of my friend, I went to try to help him. तो श्री भगवान जी बता रहे हैं मेरे मित्र To की say वजह yes से or no with the sadhu. मुझे मेरे मित्र की मदद करनी थी कि बताने के लिए कि साधु है या नहीं Therefore, he dragged me. इसलिए वो मुझे खींच कर ले गया Therefore, you get this impression that Prabhupada had zero interest to go there. तो इसलिए यहाँ से बात समझ में आती है कि प्रभुपाद को बिल्कुल भी कोई रुचि नहीं थी That's why he's saying some special mercy or grace that under that pretext I was actually forced there, and then to my surprise,
then I was able to meet, my guru. कि ये बहुत विशेष बात थी मुझे मेरा मित्र कि मुझे जबरदस्ती वहाँ जाना पड़ा और इसकी वजह से मैं श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने गुरु से मिल पाया. It wasn't his father that he had many like sadhus and gurus and all these people were always coming over and trying to say something and preaching something. So he was not impressed with all these people. तो उनके प्रभुपाद के पिताजी घर पे कई बार साधुओं और अलग-अलग तरह के लोग बुलाते रहते थे लेकिन प्रभुपाद उनकी बातों को सुन के कभी भी उनसे प्रभावित नहीं Speaking some nonsense, they want some money, they so now bless you, give you some money, all this type of thing. वो कुछ फालतू बातें करते थे कुछ आशीर्वाद देते थे कुछ पैसे पाने के लिए. So on the first meeting we went there, we offered our obeisances. पहली मुलाकात जब हमारी उनसे हुई तो हमने अपना प्रणाम उनको. So Prabhupada, just him and his friend offered obeisances to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. प्रभुपाद और उनके मित्र ने श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को प्रणाम किया. And immediately Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur started saying, "You are all educated young men. Why don't you take up Sri Chaitanya Mahaprabhu's cult and preach this all over the English-knowing public, based on beginning obeisances." श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब वो हम दोनों को प्रणाम करते हुए देखा तुरंत उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप लोग जवान पढ़े लिखे लोग लगते हैं. Absolute instruction. चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में प्रसारित क्यों नहीं करते? कैसा रहा ये परम निर्देश? So you can imagine Prabhupada's surprise, he had no interest to go there. तो आप Pays देखिए obeisances out of customary respect to sadhu, right? तो देखिए ये कैसी बात है. प्रभुपाद को बिल्कुल रुचि तक नहीं थी वहाँ जाने में और बस किसी तरह के कस्टम को पालन करने के लिए उनको प्रणाम And without करना. asking anything, immediately he's instructed by Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur that you take up Mahaprabhu's cult and preach it all over the world and every town and village, every English-knowing public. You speak nice English. और बिना उनके कुछ कहे ही श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको निर्देश दिया कि आपको विदेश में जाकर अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु की संस्कृति का प्रचार करना चाहिए क्योंकि आपने काफी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं. And even he was challenging them. Why you're not taking up this matter? Why you're not taking up this responsibility? और यहाँ तक कि श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनको चुनौती दे रहे थे क्यों नहीं आप इस प्रक्रिया को गंभीरता से ले रहे हैं. This is Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. You're an Indian body, you're educated, you have all the benefits. Why you're not just immediately going and preaching to these people? ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे थे आप लोग पढ़े लिखे जवान लोग हैं भारतीय लोग हैं क्यों नहीं आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा को लेकर बाहर जाकर प्रसार कर रहे हैं. No other discussion. First thing, they didn't even finish obeisances yet. कोई और चर्चा ही नहीं. उन्होंने तो प्रणाम भी तक पूरा नहीं किया था उसके बाद से ही उन्होंने ये चर्चा शुरू कर दी. And Prabhupada said, so I argued with him. And so many different ways. प्रभुपाद ने कहा फिर मैंने उनसे थोड़ी बहसबाजी की अलग-अलग. That also shows that Prabhupada had no real interest to surrender or to go find a guru or even to go there. तो ये भी दिखा रहा है कि प्रभुपाद की कोई इस तरह की रुचि नहीं थी गुरु को शरणागत करने के लिए गुरु को खोजने के लिए यहाँ तक कि वो वहाँ तक जाना तक नहीं चाहते. And Prabhupada said at that time I was a nationalist and I told that who will accept our message? We are a completely dependent nation. Nobody will care what we have to say. तो श्री प्रभुपाद ने ये कहा कि उस वक्त वो देशभक्ति में थे तो उन्होंने कहा हम अभी गुलाम हैं और हमारी बात अभी कौन सुनेगा. But also at that time I belonged to Vaishnava family. I was born in Vaishnava family. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, Radha Govinda, that was our worshipful deities in our home. और साथ ही साथ प्रभुपाद कह रहे हैं मेरा जन्म वैष्णव के परिवार में भी हुआ था. श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और राधा गोविंद ये सब हमारे पूजनीय विग्रह थे हमारे घर में. How's that Vaishnava family worshiping Gaunitai from the beginning of your life? कैसा है ये वैष्णव परिवार गौर निताई की पूजा अपने जीवन में शुरुआत से Nitya Siddha. नित्य सिद्ध. So Prabhupada says, I was very glad that this Radha Krishna cult and Chaitanya Mahaprabhu, that this sadhu is trying to preach that combination of Radha and Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu, that combination, they were his Ishtadev worshipful deities, that he's trying to preach this topic, that combination. Prabhupada said, this was very, very nice. I like that. प्रभुपाद ने कहा मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि कैसे राधा कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के को मिलाकर उनके जो सिद्धांत है उसको प्रचार करने का प्रयास कर रही है. देखकर मुझे बहुत खुशी हुई.
So it melted Prabhupada's heart. तो ये देखकर प्रभुपाद का हृदय पिघल And गया। at that time, then we had some talks. और उस समय हमारी कुछ बातचीत हुई And of course, I was defeated by all of his arguments. और अवश्य मैं उनके सारे बहस से मैं हार गया। My arguments were defeated by his arguments. मेरी सारी बहस उनकी बहस के सामने हार गई। And then when we came out, और जब हम बाहर आए, then devotees offered us prasadam and with very, very nice treatment there. और भक्तों ने बहुत सारा प्रसाद दिया और हमारे हमसे बहुत अच्छा व्यवहार किया। And then when we came out on the street with my friend, he asked me, "So, what is your opinion of the sadhu?" और जब हम बाहर जब सड़क पर आए तो मेरे मित्र ने मुझसे पूछा तो इस साधु के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? Then Srila Prabhupada said, "Here is the right person who has taken up Sri Chaitanya Mahaprabhu's message, and now it will be distributed." उन्होंने कहा अब श्री चैतन्य महाप्रभु का संदेश लोगों के सही प्रतिनिधि के हाथ Sri में Chaitanya और Mahaprabhu. Prabhupada says, so at that time, a fool, he's saying that I made such a big statement, but really I'm just a fool, but that was my opinion. तो श्री प्रभुपाद ने कहा असल में मैं एक मूर्ख हूँ और लेकिन मेरा ये एक मत है उनके प्रति। And I accepted him as my spiritual master immediately. और तुरंत ही मैंने उन्हें अपने गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया। Not officially, केवल औपचारिक तरीके से नहीं, but in my heart. बल्कि मेरे पूरे हृदय में। So Krishna and his dear devotee immediately convinced someone who is simple and dependent, faithful, they get mercy. तो कृष्ण के स्वरूप के तुरंत वो जो सरल हैं और कृपा के ऊपर आश्रित हैं उनको तुरंत वो मदद करते हैं, उनको कृपा देते हैं। So this is very nice description of how the Lord comes in different times and places, and then ultimately, as it came to Kali Yuga, there would be no qualification. So that means now everybody needs special mercy. तो ये बहुत ही अच्छा विवरण है कि भगवान किस तरह के अलग-अलग युगों में अलग-अलग तरह के अवतार लेते हैं और कैसे जब कलियुग में अवतार लेते हैं जहाँ लोगों के पास कोई योग्यता नहीं है। Because a birth in Kali Yuga means most sinful, degraded age. This means accumulation of Himalayan mountains of sinful desire and sinful reactions are just completely like a stone has made our heart and consciousness. So we have no real qualification. तो कलियुग में जन्म होने का अर्थ ही है बहुत सारे पाप कर्म की इच्छाएं, पाप कर्म की प्रतिक्रियाएं हमारे हृदय में पत्थर की तरह बन चुकी हैं, तो इसलिए हमें विशेष कृपा के अलावा हमारे पास कोई अन्य मौका नहीं है। And when Srila Prabhupada was praying on Jaladuta, he was praying to the Lord, how will these people who are so degraded and so completely low consciousness, how are they going to accept all of this information from Srimad Bhagavatam? और श्री प्रभुपाद जब जमदूत में जा रहे थे वो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे थे कैसे ये लोग जो इतने पतित हैं, इतनी कम चेतना वाले लोग हैं, कैसे ये श्रीमद् भागवतम की सराहना कर पाएंगे? And I think in those prayers Prabhupada saying, "Oh Krishna, you're what is it? You're the supreme mystic, Yogeshwara. You're a supreme mystic. So you put these people in Maya by your mercy. You can also get them out of Maya by your mercy." और कृष्ण कह रहे हैं योगेश्वर आपने इनको माया में डाला है और आपकी कृपा से ही आप इनको माया से बाहर भी निकाल सकते हैं। So if that's your desire, that you want to deliver all of these most fallen souls with no qualification, तो अगर ये आपकी इच्छा है indiscriminately, तो सबसे पतित लोगों का जिनके पास कोई योग्यता नहीं है उनका उद्धार करने के लिए बिना किसी भेदभाव के, then only you can do it. तो केवल आप ही इसे कर सकते हैं। And even Advaita Acharya, when they were preaching in the Navadvip, right, they were frustrated because everyone was so materialistic, nobody wanted to become devotee. और यहाँ तक कि जब अद्वैत आचार्य वो लोग भी जब नवद्वीप के इलाकों में प्रचार कर रहे होते थे तो लोग इतने कर्मवादी थे, वो इन प्रक्रियाओं को त्याग करने के लिए तैयार ही नहीं थे और इसको चुनने के लिए। And then some devotees from ISKCON went and spoke to Advaita Acharya and said, "Well, we have a bridge preaching program." और कुछ भक्त जो है ISKCON के अद्वैत आचार्य के पास गए, उनको बताया कि हमारे पास एक ब्रिज प्रीचिंग करने का प्रोग्राम है। No, I'm sorry.
I got a little confused. मुझे क्षमा कीजिएगा मैं I थोड़ा have सा to be accurate. Guru Sadhana Shastra. मुझे गुरु साधु शास्त्र के हिसाब से बात करनी होगी I was thinking of one devotee, Advaita Acharya, I know, he was preaching. मैं एक भक्त के बारे में सोच रहा था जो अद्वैत आचार्य हैं उनका नाम और वो प्रचार कर रहे हैं So even Advaita Acharya, right, he's Vishnu Tattva platform, and nobody getting purified, nobody joining, nobody wants to be a devotee. They're all frustrated. There's all Nitya Siddha, right? Devotees who came before Mahaprabhu, because everybody know Mahaprabhu's coming. They all want to participate in that Leela. They're all preaching, and nobody joining. Nobody wants to be a devotee. And then they're frustrated. How is it? यहाँ तक कि अद्वैत आचार्य जो स्वयं विष्णु तत्व हैं और जो महाप्रभु के प्रकट होने से पहले सारे लोग यहाँ प्रकट हुए उन्होंने प्रचार करने का प्रयास किया लेकिन तब भी कोई भक्त नहीं बन पाया और पूरी तरह से वो हताश हो गए So I could understand why maybe someone would be attracted to bridge preaching because nothing else is working, isn't it? इसीलिए ये एक तरह से देखने में लगता सही लगता है कि लोग क्यों ब्रिज प्रीचिंग की तरफ आकर्षित हो रहे हैं But he prayed to Sri Chaitanya Mahaprabhu, please come, you please descend here. लेकिन उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना की कि कृपया आप यहाँ अवतार लीजिए I'm crying, praying, begging. और रोने लगे प्रार्थना करने लगे भीख मांगने लगे That if you don't come here, none of this is going to work. अगर आप यहाँ नहीं आएंगे कुछ भी चीजें काम नहीं करेंगी Nobody's going to become devotee. No one's going to get purified. No one's going to get special mercy. Nobody's going to get Krishna prema. कोई भी शुद्ध नहीं हो पाएगा कोई भी भक्त नहीं बन पाएगा किसी को विशेष कृपा नहीं मिलेगी किसी को कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा कोई भी किसी का भी उद्धार नहीं होगा That means you yourself have to come here. यानी कि आपको स्वयं यहाँ आना होगा So without Mahaprabhu, nobody can be a preacher. Without his mercy and his empowerment and mercy, nobody can be a preacher. महाप्रभु की कृपा और उनकी शक्तिकरण के बिना कोई भी प्रचारक नहीं बन सकता Just giving some intellectual, some gyan, some advice, it's not going to work. It's not going to be practically effective. तो कुछ बुद्धिमानी वाली बातें कुछ ऐसी चीजें ज्ञान की बातें की जा सकती है जो असल में किसी तरह का प्रभावकारी कार्य Even Srila Prabhupada is arguing initially with Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur. यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से शुरुआत में बहस He said it's kind of like Arjuna, right? Acting like conditioned soul. जैसे अर्जुन की तरह एक बद्ध जीव का व्यवहार यहाँ दिखा रहे हैं And then finally he just surrendered. और अंत में उन्होंने केवल शरणागत कर दिया They got superior instruction, they got a superior, higher taste and effective, a good effect by that association. उनको एक ऊंचा निर्देश मिला ऊंचा प्रभाव मिला उस ऊंचे संग के माध्यम से And it changed him. और इसलिए उन सभी को उनको परिवर्तित कर दिया और That उनको आश्वस्त कर intelligence दिया। and faith comes directly from the Lord and by His mercy and the mercy of His dear devotee and parampara. क्योंकि ये बुद्धि और श्रद्धा सीधे सीधे भगवान से और उनके भक्त के माध्यम से परंपरा के माध्यम से मिलती है Srila Prabhupada, he just coming to that park in New York, was Tompkins Square Park. श्रील प्रभुपाद न्यूयॉर्क के उस बगीचे में आए टॉम्किंस I saw one picture recently. They had some kind of political, kind of I don't know what they call it, like when you're going out from Raleigh? like a rally, right? And it said Tompkins Square Park, and I looked, and that tree, Prabhupada trees, was still right there. It reminded me of that place where Prabhupada was giving a lecture there. और हाल ही में मैंने एक तस्वीर देखी उसी जगह की बगीचे की वहाँ पे जो वो वृक्ष था जहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने कीर्तन किया था उसकी तस्वीर मुझे अभी भी वहाँ मौजूद है वो मुझे दिखाई दी हुई पेड़ And Srila Prabhupada, he went to Rupa Goswami, right, and he prepared himself, because he knew, okay, now I'm going across the ocean, I'm going to try to preach to all of these people. This is a big risk. तो श्रील प्रभुपाद रूप गोस्वामी के मंदिर में गए वहाँ पे उन्होंने पूरा तरीके से अपने आप को तैयार किया क्योंकि उनको विदेश में जाकर पाश्चात्य में जाकर प्रचार करना Because he शुरू understood his guru's desire and mission, and he was anxious for the pleasure of his guru, Bhaktivinoda Thakur and Sri Chaitanya Mahaprabhu, then he was willing to risk his life to try to somehow or other, please and get the mercy from his guru. और किसी तरह वो समझ पाए अपने गुरु की इच्छा जो उनकी इच्छा है उनके गुरु श्री भक्तिविनोद ठाकुर उनकी इच्छा को पूरे विश्व में प्रचार करना उनको सुखी करना ये विचार वो समझ पाए
So Prabhupada said all advancement in spiritual life is more or less completely dependent on the mercy of the spiritual master. श्री प्रभुपाद बताते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में जो भी प्रगति कम या ज्यादा पूरी तरह से गुरु के कृपा के ऊपर आधारित है. So yes, it is important who and what is spiritual master. इसीलिए ये Otherwise, if महत्वपूर्ण everything है is based on mercy from that personality, कौन है और क्या है गुरु बहुत महत्वपूर्ण है. क्योंकि अगर सब कुछ उनकी कृपा के ऊपर आधारित है and you want to make any advancement in your spiritual life, or to speak of reaching the goal, that's absolutely essential. It's critical. भक्ति में कुछ भी प्रगति करने के लिए उनकी कृपा की जरूरत है. तो कृष्ण प्रेम प्राप्ति का क्या कहना, जो कि हमारा वांछित फल है. Any questions or points? कोई प्रश्न या कोई बात कहना चाह रहा हूँ? Maharaj, I would like to know that Are you getting stronger? आप थोड़े शक्तिशाली होते जा रहे हैं क्या? they say I think that you're getting stronger. मुझे लग रहा है आप थोड़े और शक्तिशाली When I होते जा first रहे हैं. started hearing him, he was like squeaking like a mouse. I couldn't even hear what he was saying. जब शुरुआत में ये बोलते थे चूहे की तरह बोलते थे, सुनाई भी नहीं देता था क्या कह रहे हैं. He was like a little afraid mouse. जैसे I was जब वो like, चूहा what है, is he speaking about? अभी तो ऐसे हिम्मत से बोल रहा है. Is this the same guy? What happened? क्या हुआ आपको? This is nice. It's good. It's a good sign. बहुत अच्छा संकेत है. You're getting some confidence, some आपको strength. थोड़ा आत्मविश्वास Some हो, faith. कुछ श्रद्धा मिल रही है. That's practical. कितना व्यवहारिक है. devotees are training properly. Huh? Devotees are training me properly. Devotees who? Adam? Who's training you from? ये भक्त मुझे अच्छे से प्रशिक्षण दे रहे हैं. कौन आपको प्रशिक्षण दे रहा है? एडम. Who's he giving credit to? आप किसको Who श्रेय gets the देना credit? चाहते हैं? किसको किसको Who श्रेय gets देना the चाहते credit? I think it's team effort. हैं? किसको श्रेय देना चाहते हैं? Team. ये पूरी टीम ने मिलकर किया है. Team. Together, what is it? Everyone achieves more. टीम शब्द का अर्थ है सब लोग मिलकर साथ में ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं. Together, everyone achieves more. साथ मिलकर सब लोग ज्यादा प्राप्त कर सकते हैं. You ये see, Prabhupada had nice experience, nice behavior of devotees, nice prasad. They're completely attractive. It's like this very, very nice. तो उन सभी भक्तों के बीच में उन्होंने उनको अच्छे तरीके से प्रसाद दिया गया, उनके साथ अच्छे तरीके से व्यवहार किया गया, तो उन्होंने इसको बहुत सराहना की, उनको बहुत अच्छा लगा ये. So my question is that how can I be grateful to How what? how can I How can I understand that? I can be grateful to Faithful. Grateful. Grateful. Yeah. Grateful to Grateful and faithful. grateful and grateful towards Guru and Krishna. If you're faithful, you'll be grateful. वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे मैं गुरु और कृष्ण के प्रति थोड़ा श्रद्धावान या कृतज्ञ बन सकता हूँ. मुझे बता रहे हैं आप श्रद्धावान बनिए और उसके बाद कृतज्ञ अपने आप हो जाएंगे. So faithful, then grateful. श्रद्धावान होइए फिर कृतज्ञ हो जाएंगे. So फिर How can that be possible? become faithful. वो पूछ रहे हैं कैसे संभव है. बोले And if you श्रद्धावान get बने. faith, you'll understand how Krishna and his devotees are helping you. तो जब आप श्रद्धावान बन जाएंगे यानी कि आप समझ पा रहे हैं कैसे कृष्ण I और realize I really have no qualification, I don't really deserve anything. आप समझ पा रहे हैं कि मेरी असल में कोई योग्यता नहीं है, मैं किसी चीज का Somehow नहीं they're हूँ. showering some mercy on me. किसी तरह से ये लोग मेरे ऊपर कुछ कृपा कर They're रहे हैं willing to help me. और ये अपनी इच्छा रख रहे हैं I कि feel मैं मदद benefited by their और association. इनके संग से मुझे लाभ I है. feel some shelter and protection, some happiness. मुझे कुछ आश्रय रक्षण और इनके संग में सुख Not मिलता है. suffering as badly as before. पहले की तरह मैं दुख में नहीं हूँ. I feel some shelter and protection. मुझे कुछ आश्रय और रक्षण महसूस होता है. So I have a lot to be grateful for. तो इतनी सारी चीजों के प्रति मुझे It कृतज्ञ says, हूँ. you have to count your blessings. एक कहावत है आपके आशीर्वादों को आपको गिनना चाहिए. Count the blessings. आशीर्वादों को गिनना. Instead of being negative and just looking at everything and everyone, you know, in a critical fault-finding way. इसके बजाय कितने लोग आपके प्रति नकारात्मक हैं, आपके प्रति दोष निकाल रहे हैं, आपकी गलतियां निकाल रहे हैं, उसको देखने के लिए. Everyone has some fault. सभी Nobody के is अंदर perfect here. कोई ना कोई गलतियां हैं. But if someone in spite of that is doing everything to help you, then we should appreciate it. तो इतनी सारी चीजों के बावजूद भी अगर लोग मेरी मदद करने के लिए तैयार हैं, तो मुझे उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. If you're in the hospital and suffering and some doctor or nurse come and they try to help you and they're helping you and you say, oh, they're not very beautiful or very attractive
people, you know. अगर आप अस्पताल में हैं, पूरी तरह से बीमारी की वजह से कष्ट में हैं और कोई डॉक्टर या नर्स आके आपको ठीक करने का प्रयास करे तो आप उनके अंदर दोष नहीं निकालते और देखने में अच्छे नहीं Right? लगते। They're sitting there caring for you, trying to take away your pain and make sure you're as healthy as possible, and we're just criticizing them? Like this, they're not like perfect. अगर वो हमारा ध्यान रखने का प्रयास करें, हमारी मदद करने का प्रयास करें, कैसे हम स्वस्थ हो सकें और हम बैठ के उनके अंदर अगर दोष निकालें, ये लोग सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं। You know, you get in a car accident, and the guy comes with the ambulance and says, you know, you people don't, you know, send another team. मान लीजिए आप किसी कार की दुर्घटना में आप जा चुके हैं, एम्बुलेंस लेकर कोई व्यक्ति आता है, आप कहते हैं नहीं ये एम्बुलेंस ठीक नहीं है, आप दूसरा टीम लेकर आइए। I don't like the color of your shirts. ये जो जिस रंग की शर्ट पहनी है मुझे पसंद नहीं है। I was expecting someone a little older. मैंने उम्मीद की थी कोई बूढ़ा आदमी है। You don't look so strong. Are you going to be able to lift this bed into the ambulance? You know. अब देखने में थोड़े शक्तिशाली नहीं लगते क्या आप ये जो बेड में मुझे उठाकर एम्बुलेंस के अंदर डाल सकते हैं? Right, if you're laying on the side of the road, is that really like? Can't you just be like a little grateful, someone trying to help you out? You know. आप रास्ते के किनारे खड़े हैं, तो अगर कोई आके आपकी मदद कर रहा है तो आपको उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। So we have to, if we're trying to be appreciative and grateful, which Krishna really likes, because he's using his devotees to help us, then we'll get more mercy. We'll have more to be grateful for. तो अगर हम इस कृतज्ञ हैं और सराहना कर रहे हैं अपने हमारे आसपास के भक्तों की, जिसको कृष्णा ही इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी मदद करने के लिए, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं कृष्णा के Just finding fault and criticizing and being negative and pessimistic and very like anti-social, then you know these are the people who are willing to help you. Why do you think Krishna's sending these people to help you and you're misbehaving like that? तो अगर आप नकारात्मक व्यवहार रखेंगे, दोष निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे और असामाजिक तरीके से व्यवहार करेंगे उन लोगों के साथ जिनको कृष्ण ने आपके पास आसपास भेजा है आपकी मदद करने के लिए। When we first come and get help, we're very appreciative and grateful, and afterward, when we're senior devotees, we're like pessimistic and argumentative and finding fault with everybody, no appreciation, no gratefulness, right? What happened? You became too advanced to be humble and grateful and appreciative for people trying to help you? जब हम शुरुआत में आए थे तो जो भी लोग हमारी मदद करते थे हम उनके प्रति बहुत ही विनम्र और उनकी सराहना करते थे, उनके प्रति कृतज्ञ होते थे। फिर अचानक से धीरे-धीरे हम थोड़े उन्नत भक्त हो गए हैं। अब हम उन्हीं लोगों के प्रति नकारात्मक तरीके से दोष निकालते हैं, विनम्र नहीं हो पाते हैं। Does that help you? Yes. It says, I think I heard it said that the only thing Krishna won't forgive is if you're not grateful. मैंने ये बात सुनी है कि कृष्ण एक ही मात्र चीज जिसको कभी भूलते नहीं है जब आप भक्तों के प्रति कृतज्ञ नहीं रहते। So Krishna is doing everything to try to help us, and we're resentful and ungrateful. You cannot really overcome that. You cannot get mercy to overcome that. That's a bad attitude. तो अगर कृष्णा सारी मदद कर रहे हैं उस भक्तों के माध्यम से और अगर आप उसके प्रति गुस्सा कर रहे हैं या कृतज्ञ नहीं रह पा रहे हैं तो ये सबसे बुरी चीज है जो Like enviousness. ये एक तरह का द्वेष है, ये बहुत ही If we're not smart enough to realize this is like this is like nuclear waste. तो अगर हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं इस बात को समझ पाने के लिए एक तरह का परमाणु का Period. You can't bring that to Vaikuntha. You know what I mean? इससे आप छुटकारा पाएंगे, इससे आप वैकुंठ लोक में नहीं लेके जा सकते। They'll check you at the gates to see if you have any nuclear waste in your pockets, in your heart, your mind. दरवाजे में आपको चेकिंग की जाएगी कि आपके हृदय में, आपके मन में इस तरह के ये परमाणु कचरा आपने रखा है या नहीं। I went through the detector at the airport, right? They have this thing, electric, right? And now I have a brand new steel knee, so all the lights are blinking. They thought I was a terrorist, I'm like, it's my knee! तो एयरपोर्ट में जब डिटेक्टर से हमें जाकर गुजरना होता है चेकिंग के लिए तो मेरे जो guys behind this like metal thing with the machine gun, तो सारे जो डिटेक्टर बनने लगा उनको लगा मैं कोई इस तरह का आतंकवादी हूँ तो जो बंदूक लेकर खड़े हो मुझ पे उन्होंने बंदूक तान दी तो मैंने कहा नहीं ये मेरा बस घुटना है। Alright, it wasn't that bad. I'm exaggerating a little bit. थोड़ा सा बड़ा चढ़ा के I gotta be honest with you. थोड़ा सा ईमानदारी रखूंगा आपको।
Otherwise, people will start writing to the government, how'd you treat this person like that? You know? काफी लोग सरकार को लिखना शुरू कर देंगे व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हो Came all the way to India looking for spiritual life and trying to shoot the guy, you know. इतने दूर भारत आए आध्यात्मिक जीवन के लिए और इनको गोली मारने का प्रयास किया जा रहा है Anybody else have point or question? किसी अन्य के पास कोई प्रश्न या कोई बात है Everyone's good? सभी ठीक है Yeah? Hare Krishna, Shila Gurudev. Hare Krishna. So, I want to know that you are explaining about Sri Advaita Acharya. He is The one from ISKCON or the original? The one who was prone to the idea of bridge preaching or the Krishna Tattva one? ISKCON वाले अद्वैत आचार्य या जो ब्रिज प्रीचिंग करना चाहते हैं या जो मूल अद्वैत Let's आचार्य clarify which Advaita Acharya we're talking about. चलिए ये बात हम साफ कर दें कौन से अद्वैत आचार्य की आप बात करना चाहते Which हैं one are you talking about? और किसके बारे में बात कर रहे हैं Vishnu Tattva. Oh, the original. अच्छा मूल विष्णु तत्व के बारे में Yes. So you are explaining that they are trying to preach the message of Krishna, but they are not able to do it. So It's amazing. what is the tattva? How can behind it? Vishnu Tattva not purify and get everybody to surrender and become Vaishnava? तो इतनी अद्भुत बात है कि कैसे विष्णु तत्व भी लोगों को शुद्ध करके कृष्ण के प्रति शरणागत करने के लिए लेकर गया Even it says that Advaita Acharya, he was saying that when he was crying out to the Lord to come, to descend, he was saying that if you don't come, then don't call me this name, Acharya. If I can't make you come here, I don't want this name, Acharya. तो यहाँ तक कि अद्वैत आचार्य ने जब भगवान को यहाँ अवतरित होने के लिए प्रार्थना की क्रंदन किया तब वो उन्होंने कहा अगर आप अवतार नहीं लेते हैं यहाँ तो मुझे आचार्य ये नाम मत दीजिए Thank you, Guru. Hare Krishna. धन्यवाद So, how do you answer that question? इस प्रश्न का उत्तर आप कैसे देंगे Let's see how much mercy you're getting. चलिए देखते हैं आपको कितनी कृपा मिल रही है How can Advaita Acharya not purify and make somebody want to be devotee of Krishna? कैसे अद्वैत आचार्य किसी को शुद्ध करके कृष्ण का भक्त नहीं बना सकते They know that Krishna has a desire to come. Who knows? Sri Advaita Acharya, because It's a yoga maya, right? Otherwise, how do they cry out? They're showing we have to cry out to Krishna. वो ये दिखाने का If प्रयास it's not the yoga maya, how are they going to cry for Krishna? तो वो योग माया के प्रभाव में है वो हमें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हमें कृष्ण के लिए रोने की जरूरत है वो अपने आचरण से दिखा रहे हैं Otherwise, it'll just be like a drama, like I'm not really crying. ये बाहर से नाटक होगा हम असल में रो नहीं रहे हैं It's got to be really cry from the heart. That means that devotee means you need a yoga maya. मतलब पूरे हृदय से कृष्ण होने की जरूरत है All devotees, right? When Krishna's fighting the demons, and they're crying, they're worried for Krishna. It's part of that leela, isn't it? So it's a yoga maya. तो जब कृष्ण असुर के साथ युद्ध कर रहे होते थे तो वहाँ उनके बहुत सारे भक्त उनको देखकर रो रहे होते थे क्योंकि वो योग माया में है उस लीला के भाग में Or the gopis are in a mood of separation, they're always crying. और जो गोपी हैं जो वीरा के भाव में हैं वो हमेशा They're feeling mood of separation. It's the highest mood. वो सदैव होती हैं और वो वीरा का भाव है जो सबसे ऊंचा भाव है It's not like a, like a drama. It's not like a movie. ये कोई नाटक या कोई फिल्म नहीं है That's really how they feel because of potency yoga maya. ये असल में वो ऐसा महसूस करते हैं इस योग माया शक्ति की वजह से And the Lord puts his devotee in that type of yoga maya in order to glorify his devotee, that because of the cry of my devotee, he's cried so much wanting me, then he forced me to come. So he's showing that his devotee, how much potency and power his devotee has, that the Lord becomes the servant of the desire of his devotee. और भगवान To अपने glorify his devotee. भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं उनको योग माया में डालकर ये दिखाने के लिए कि जब उनके भक्त उनके लिए रोते हैं तो वो मजबूर हो जाते हैं अपने भक्त की इच्छा को पूरा करने के लिए There's competition. Devotee wants to glorify the Lord, but the Lord wants to glorify his devotee. तो ये प्रतियोगिता है भगवान अपने भक्तों का गुणगान करना चाहते हैं और उनके भक्त भगवान का गुणगान करना चाहते हैं
Even Krishna is supreme controller. He said, even I'm controlled by the love of my devotees. कृष्णा जो परम नियंत्रण करता है वो कहते हैं मैं भी अपने भक्तों के प्रेम में नियंत्रण में आ जाता हूँ. Whatever they desire, whatever they want, I'm their servant. जो भी Not servant, right? जो भी वो इच्छा करते हैं, जो भी उनकी खुशी होती है, मैं उसको भक्त वत्सल की तरह पूरा करने का प्रयास करता हूँ. That makes Krishna more happy. ये कृष्ण को और ज़्यादा सुखी. That's why it said that Krishna himself says that I'm more pleased when you serve and you worship my dear devotee than when you directly try to serve and please me. इसलिए कृष्ण ने कहा है जब आप मेरी सेवा करते हैं, मुझे सुखी करने का प्रयास करते हैं, उससे ज़्यादा सुखी मैं तब होता हूँ जब आप मेरे भक्त को सुखी करने का और उनकी सेवा करने का प्रयास करते हैं. So those devotees, their mercy, they're able to call, just like Srila Prabhupada, when they in Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when they come to other place, then they can call Krishna to please come, Mahaprabhu, please come and manifest in this place. Otherwise, how will these people, how will you deliver all of these people without your mercy and your potency and your compassion? It's not possible. जब श्री प्रभुपाद अपनी कृपा से श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर अपनी कृपा से अपनी प्रार्थना से चैतन्य महाप्रभु उनको प्रकट कर पाए, उन्होंने कैसे सारे जीवों को शुद्ध करके उनकी मदद की जाती है और करुणा दी जाती है उनको. So we need somehow by good fortune to get the association of those Vaishnavas that when they kindly ask the Lord to manifest and to descend and to shower mercy and blessings, that it practically undeniably manifested. Otherwise, why should we accept it? तो हमें ऐसे भक्तों की जरूरत है जिनके करुणा के माध्यम से, जिनकी दया के माध्यम से और जिनके क्रंदन के माध्यम से कृष्णा प्रकट होंगे और हमारी मदद हो पाएगी. Everyone, thank you very much for your kind attention बहुत बहुत धन्यवाद and letting me give the longer version. पूर्वक श्रवण करने के लिए और मुझे अनुमति देने के लिए कि मैं आपके सामने ये विस्तृत प्रस्तुति रख पाया. I think now you have a little bit of appetite and you look to have a nice rest tonight, so we can continue our program tomorrow. अभी देखकर लग रहा है आपका हाजमा बढ़ रहा है और हम अपना ये कार्यक्रम कल जारी रखेंगे. I hope we got some mercy by our attempt to try to glorify their devotees of the Lord, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. मुझे उम्मीद है आप सभी को लाभ मिला होगा हमारे इस प्रयास से. बहुत प्रिय भक्त शिष्य में भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के गुणगान करने And those के प्रयास. pastimes, especially Srila Prabhupada, are very, very sweet and also very much nice lessons are there also. और विशेष करके ये जो लीलाएं जो श्री प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बीच में ये बहुत मीठे हैं और बहुत विशेष हैं. I hope you got a lot of mercy today also. और मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत सारी कृपा मिली है आज. You look tired, so that means that you got some mercy. आगे भी लग रहा है इसका मतलब आप लोगों को कृपा मिली. But it's a good tired, लेकिन ये अच्छी थकान है. right? Because we're trying to get mercy, we're trying to do devotional service in the Holy Dham. We're not just burning, wasting energy in some foolish, frivolous, whimsical nonsense somewhere else. हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, कृपा पाने का प्रयास कर रहे हैं. हम अपना समय शक्ति फालतू चीजों में, मनोधर्म में, किसी भी बकवास में खर्च करने का प्रयास नहीं. So we're fortunate to हम have the chance. भाग्यवान हैं कि हमें ऐसा मौका मिला है. So let's try to help ourselves so that also we can be instrumental to help others in this preaching mission. हम अपनी स्वयं की मदद करने का प्रयास पहले करते हैं ताकि बाद में हमें उपकरणों के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सके दूसरे लोगों की मदद करने के. It's very interesting because I won't get too far into it, but I was thinking that the work that Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and Bhaktivinoda Thakur did to clean out all of these deviations and all of these bogus, criminal types of so-called philosophies going on in the name of Vaishnavism, it completely, turned everything and reestablished what is the actual, Shuddha Sattva Vaishnava Siddhanta and what is Mahaprabhu's movement. Because if that wasn't done first, then how do you bring all these people from the world back here when all that chaos would still be going on? So first that had to be straight and become perfect yourself and make a condition with the books from the Goswamis, the holy places in Vrindavan and Mayapur, the temples, the establishment of the parampara, the philosophy, the books, like all of that as much as possible had to also be
purified, exposed, torn down, established as a foundation and a house by which these people who Prabhupada will go and collect from around the globe will be able to come back to India and find some kind of semblance of sanity and organization and shelter and protection. So it seems like it's not just become perfect yourself, but also create the environment to be able to facilitate helping those people that, that Prabhupada and his devotees will collect from around the globe. That also is required. Otherwise, what are we bringing them back to? तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और शिला भक्ति ठाकुर का सबसे प्रमुख प्रचार और कार्य देखेंगे कि जितने तरह के वैष्णव सिद्धांत के नाम में जितनी विमुक्ताएं और जितनी अफरा तफरी मची हुई थी, इन सभी को किस तरह से विनाश किया जाएगा और सही वैष्णव सिद्धांत को कैसे स्थापित किया जाएगा, कैसे परिवेश को आसपास शुद्ध किया जाएगा, कैसे मायापुर धाम, वृंदावन और रूप गोस्वामी जैसे साहित्य को सही तरीके से वैष्णव सिद्धांत को स्थापित किया जाएगा और स्वयं के जीवन को सार्थक किया जाएगा इनको सभी चीजों का इस्तेमाल करके, तब बाहर के विदेश के लोगों को यहाँ लाकर आकर्षित किया जा सकता है और उनको भी इसको पालन करने के लिए लगाया जा सकता है ताकि प्रभुपाद जब भविष्य में ये प्रचार करने के लिए बाहर जाए और उन लोगों को यहाँ भारत में। And you could even say that all these gurus who built all of these temples in Prabhupada's movement, right, they'll be gone. Right, but these temples will be there for hundreds of years, right? So all the other souls who will come into Prabhupada's movement, birth after birth, be born back into Prabhupada's movement, they'll become more and more pure, more and more qualified, because they're just accumulating, hopefully, that mercy and certainty from Prabhupada's mercy and serving in Mahaprabhu's mission. And then the temples are there. Everything is already set up, and the same souls, maybe generations later, will actually be living and serving at the same temples with the same deities that have been established by these, these present-day devotees. So we try to look at the positive side of that as well. तो और उम्मीद है जो अभी जो भक्त हैं जो धीरे धीरे इस प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं और जैसे श्रील प्रभुपाद के जो इतने विशिष्ट गुरु उन्होंने बहुत सारे मंदिर स्थापित किए तो वो अभी हैं और बाद में चले जाएंगे, लेकिन ये मंदिर मौजूद रहेंगे और बाद में आने वाली पीढ़ियां जो इस कृष्ण आंदोलन में जुड़े हुए हैं धीरे धीरे शुद्ध होकर वापस इसी में जन्म लेकर फिर से इस तरह प्रभुपाद के द्वारा स्थापित विग्रहों की सेवा करने में लगेंगे और उम्मीद है कि वो उस कृपा को बनाए रख पाए अपने साथ। So no loss. तो कोई हानि नहीं है। Sometimes you build everything, okay, then you leave, and that's what you were supposed to do. कभी-कभी आप सारी चीजों का निर्माण करते हैं और फिर आप मर जाते हैं उन सारी चीजों को छोड़कर, तो आपकी उतनी ही जिम्मेदारी थी उसको पूरा करना और There are some engineering and some management and some ability to make money and to organize and to build these temples for future generations. Okay, then you did something. You get mercy for that. तो आपको कुछ इंजीनियरिंग आती थी, पैसे कमाने का तरीका आता था, चीजों को व्यवस्थित करने का आपके अंदर कुछ कुशलता थी, तो उसको इस्तेमाल किया गया मंदिर का निर्माण करने के लिए और उसके बाद आप चले गए और फिर भविष्य में आने वाले समय में आप फिर से शुद्ध होकर वापस आ सकते। And all the books, all the books are meant for the next 10,000 years. और ये सारी जो किताबें हैं उनके 10,000 सालों तक के लिए बनी हैं। Now we got to just make sure that they don't put too many demigods in these temples and don't change too many of the books. That's the only thing now that we have to be a little careful of. अगर हमें बस एक चीज़ सावधान होने की ज़रूरत है कि इन सारी किताबों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन न कर दिया जाए और मंदिरों के अंदर देवी देवताओं को न स्थापित कर दिया जाए। Because that's not what Prabhupada wanted. क्योंकि प्रभुपाद ऐसा नहीं चाहता। So we may have to give away a few of the demigods to some, some rich materialistic people, and maybe go back to the original books and teachings of Srila Prabhupada, but that can be adjusted. हो सकता है कुछ देवी देवताओं को हम जो एक कर्मी लोगों को जिनको भौतिक इच्छा है उनको देकर और प्रभुपाद की चीजों को फिर से वापस व्यवस्थित करके सही तरीके से बनाने को प्रयास करेंगे। So anyway, that's another whole conversation. तो कोई बात नहीं, वो एक और अलग बड़ी चर्चा। I'm just trying to see, the good. मैं केवल अच्छी चीजों को देखने का प्रयास कर रहा हूँ। It's not always, so we should take advantage of it. ये हमेशा मैं नहीं करता हूँ, लेकिन जब हो रहा है तो इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। But Chanakya Pandit says is, if you're really intelligent, you'll find gold even in filthy place. चाणक्य पंडित ने कहा है अगर आप बुद्धिमान हैं तो आप सोना सबसे गंदगी जगह से भी निकाल सकते So we have to say, okay, what is valuable? हैं। हमें ये देखने की जरूरत है क्या Regardless of कीमती the चीजें place and the निकालना way that it is, manifested. जिस जगह में और जिस तरीके से ये प्रकट किया जा रहा है। So thank you everyone very much. I appreciate it. मैं बहुत सराहना करता हूँ। Srila
Bhakti Siddhanta Shastra Thakur ki Jai, Shri Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai, Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudev ki Samaveda Bhakti Binda ki Gaur Premanande. Thank you everybody. Hare Krishna. Welcome to all the new devotees. People here, I just want to say thank you for coming and giving us a chance. बहुत सारे नए लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, मैं उनको सभी को धन्यवाद करना चाहता हूँ उन्होंने मौका दिया आपके साथ संग करने के लिए और हमें कुछ मौका देने के लिए कि मैं आपके सामने कुछ बातें कह सकूं। We're handing out prashadam. This does not mean that you have to accept me as your guru. मैं आपको केवल प्रसाद बांट रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मुझे गुरु के रूप में स्वीकार करना है। Additional seva. ये बस मैं एक सेवा कर रहा हूँ। No strings attached.